Order पैरा नंबर 1 आप पढ़ लें जैसे आप जी सर एक सेकंड लगा हुआ ऑर्डर या निकल का आप कर आप जैसे आप कहना चाहें Sir, complaint was filed by the journalist, including the then President Press Association of Supreme Court, the Association Mr. Amjad Nazir Bhatti, before this court, which was numbered as Su Moto case number 4 of 2021. The said matter was not listed for hearing for considerable time. We are informed that Mia Akil Afzal has been elected as the president. Therefore, we asked him whether he wants to pursue the matter, and he said he does. An ex-president of the association, Mr. Abdul Qayyum Siddiqui, was the second complainant, and he too wants to pursue it. Mr. Amar Mir was another signatory and is represented by London Mr. My name, and he too wants to pursue the matter. However, Mr. Asad Ali Tour, who was also a complainant, stated that he no longer wants to pursue it. On our query regarding the attack on him, he stated that the facts as stated by him are correct, but stated that FIR registered in respect of the assault on him was not properly investigated. Mr. Imran Shafkat, the fifth complainant, is not in attendance, probably because he is living in Lahore. Your Lordship, he has instructed me I'll pursue his case as well. He wants to pursue his case. आप तो कह चुके हैं. You are also appearing for Mr. Amir Mir, sir. Who? नहीं वो तो आप कह चुके थे कल. जी सर. अब इसमें सर Lordship, if we are proceeding on करते रहिए आप रुक गए. नहीं मैं रुक क्यों सर? अब मैं सर order if we are ये अगर आप पूरा पढ़ लें फिर आप अपनी बात कर लीजिएगा. The complainants before us have stated that journalists were abducted and attacked, but these crimes were not properly investigated, including attack on Mr. Asad Ali Toor, Matiullah Jan, Imran Shafkat, and Amr Mir. Your Lordship, one person was missing yesterday. Absar Alam was also attacked. Okay, आपके सामने ही हमने पूछा था. बस लेंगे, ठीक है. Most probably they missed. The journalist directed to file separate comprehensive report with regard to the police investigation of each case and whether charges are framed against anyone. Reports to be filed within 2 weeks. Mr. Toor alleged that those who carried out the attack on him themselves stated they were member of an intelligence agency under the control of federal government. The concerned investigation officer must be allowed to thoroughly investigate these crimes and give an access to all concerned, and they must not be hampered in any way. The President of the Association and that of the Islamabad High Court Journalist Association, Mr. Fayaz Mahmood, have brought on record a joint resolution passed by the two associations on 27 January 2024, which state that the Federal Investigation Agency, the FIA, has issued notices to a journalist purportedly on the ground that judiciary was being maligned, and they apprehend that journalists will be arrested when they attend the office of the FIA. The learned journalists state that the honest criticism, a judgment or an order is not a crime, and no coercive action will be taken, nor criminal case registered in this regard, and extend an undertaking on behalf of the federal government. 4. During the hearing, reference was made to the judgment of this court, PLD 2019, Supreme Court, page 318, wherein the founder of Pakistan was quoted, who wanted journalists to be responsible, independent, and fearless, and he had welcomed criticism as under. The power of the press is great, but you must remember that this power which you are wielding is a trust. Look upon it as a great trust, and remember that you are guiding honestly and sincerely the progress and welfare of your nation. At the same time, I expect you to be completely fearless if I go wrong, or if the leagues goes wrong in any direction of its policy or a program. I want you to criticize it honestly. The President of Supreme Court of Bar Association is present, and since the matter is one of the fundamental rights of the citizen, was asked if SCBA would assess the court, and he stated that he will do so. To come up. अब आप पॉइंट क्या कहना चाह रहे हैं? मेरा पॉइंट ये सर, अगर SMC 4 is restored and we are arguing on that, your Lordship order of if SMC 4 is restored and we are restored sir, उसमें एक जो it was never disposed of, it's pending. Yes, it was. Yes. जी, to restore, there's no question of restoring it arises. I would like to, we were supported your Lordship order of 2-member bench
bench before the 5-member bench when they were passing an order. آج کی بات بتائیں نا. میں آج کی بات کر رہا ہوں. میں آپ کا جو آرڈر تھا نا 2018-21 کا, اس کو اگر مجھے اجازت میں پڑھ لوں, it was a very. نہیں, آپ کو پوائنٹ بتا دیجیے نا. پوائنٹ سر یہ بتاتا ہوں کہ ہمیں پتا ہے سارے آرڈرز. جی سر. نہیں سر, وہ جو آپ نے ڈائریکشن پاس کی تھی نا اس آرڈر کے اندر, آیا اس کی کمپلائنس ہوئی ہے یا کس حد تک ہوئی ہے؟ the federal government is answerable to that. اوکے, ایک سیکنڈ میں پڑھ لیتا ہوں. کون سا تاریخ کا آرڈر آپ نے؟ یہ 20 اگست 2021 2-member bench آرڈر, اور یہ بڑا کمپریہنسو یور لارڈشپ آرڈر ہے. ایک سیکنڈ 20 اگست 2021. وہی دکھا دیں, میرے پاس 30 اگست سے شروع ہو رہے ہیں, پتہ نہیں کیوں. جناب بسم اللہ کی. یہ آرڈر 20 August 2021. An application has been submitted in court by 5 working journalists, including the President of Press Association of Supreme Court and the former President of said association, alleging large-scale violation of fundamental rights enshrined in the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan, the Constitution, and that the government and the organization agencies under its control are primarily violating these fundamental rights. Number 2, the applicants state that the journalists are harassed, intimidated, attacked, and shot at, and there are no consequences for the perpetrator, and it is further alleged that those who لمبا آرڈر ہے, ذرا پوائنٹ بتا دینا, اتنا تو پورا دن نکل جائے گا. تو بن گئی ہے نا اس پہ, اب آپ کوئی وجہ بتا دینا. یہ پوائنٹ وہ ہے پینڈنگ, یہ تو اس کے بعد تو بینچ بن گئی ہے. 5-6 پیج کا آرڈر ہے, تو پورا نکل جائے گا اس میں. اس میں سر جو ڈائریکشن پاس کی ہے نا بینچ, ڈائریکشن بتا دیجیے نا, بن گئی نا, وہ ڈائریکشن ابھی بھی ہو سکتی ہے, اس میں کیسی سی بات ہے. آپ بتاتے رہیے. پیج نمبر 5 پیرا نمبر 5 سے شروع کر. صرف بتا دیجیے نا, آپ خود بتائیں نا کیا ڈائریکشن چاہیے. سر میں پڑھ کے بتاؤں گا زیادہ بہتر. کمال ہے. آپ وکیل کو تو خود بتانا چاہیے نا, اس میں آپ کیا. آپ کا نہیں سر, اس میں آپ نے جو آرڈر, I don't know what you want, you just say یہ مجھے چاہیے, یہ کر دیں, وہ کر دیں, ہم سن لیں گے آپ کی بات. یور لارڈشپ, میں پیراگراف 6 آپ پیراگراف چھوڑیے نا, اپنے طور سے بتائیے نا کوئی چیز. میں یہ بتا رہا تھا کہ آپ نے ایک تو ڈائریکشن. سر ہمیں چھوڑ دیجیے نا, آپ کا کیس ہے یا ہمارا کیس ہے؟ سر آپ کا کیس ہے, میں کہتا ہوں جو آرڈر آپ نے دیا ہے, ڈائریکشن دی ہے, آیا وہ کمپلائنس ہم پوچھ لیں گے ان سے. اتنی سی بات, اتنی لمبی تقریر کیا کریں, ان سے پوچھ لیں گے, یہ بتا دیں گے ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے. اگلا پوائنٹ کوئی بتائیں نا. جو رپورٹ آلریڈی کال کر لی ہے نا, کل ہی وہ کہہ دیا تھا کہ ان ساری اس آرڈر میں اور کل کی رپورٹ میں بڑا ڈفرنس ہے. یہ جو انویسٹیگیشن جن ایف آئی آرز پہ ہو رہا تھا, جو 4-5 ایف آئی آرز کا تذکرہ ہوا, ان پہ تو ان کو آلریڈی کہا ہے کہ اس پہ تو جو بھی اس وقت اپڈیٹ ہے, جو بھی پروگریس رپورٹ ہے, وہ تو یہ فائل کریں گے. پیرا 6 پڑھ دیتا ہوں بس, اس کے آگے پھر میں ختم کر لیتا ہوں. دو باتیں کرتا ہوں. The ever so frequent attacks on journalists and their abduction, including the federal capital territory Islamabad, is another violation of fundamental rights which has been raised in the application. It is stated that the Constitution in its Article 9. بھئی اب آپ دیکھیے نا, اب آپ کا you are in a way conflicted. You are yourself the government. ایک سے سن تو لے نا. جی سر. جب جرنلسٹ سے آپ منسٹر بن گئے تو اب ذمہ داری تو آپ پہ بھی ہو گئی, آپ بھی تو حکومت ہیں. آپ سر فیڈرل گورنمنٹ سن تو لیجیے نا. جی سر. یہ ایسے تو نہیں ہوگا نا. ہم مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے, ہم جرنلسٹ کی پٹیشن اٹھاتے ہیں, کچھ جرنلسٹ پیچھے ہٹ جاتے ہیں. بھائی پتہ نہیں ریزن کیا ہے. اب آپ کہہ رہے ہیں حکومت سے پوچھیں. کس حکومت سے پوچھیں؟ بلوچستان کی حکومت سے پوچھیں. فیڈرل گورنمنٹ آف پاکستان سر. تو پھر آپ ریزگنیشن بھی دے دیجیے ساتھ ساتھ. سر وہ نہیں, اب ذرا ایسی آپ باتیں جو کر رہے ہیں نا, مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے. آپ کا پوائنٹ بتا دیجیے نا. یو آر اب تو آپ ہی کے خلاف ہم آرڈر بھی کریں گے نا. اب آپ 2 ٹوپیاں پہنے ہوئے ہیں, سوچ لیجیے. آپ کہہ رہے ہیں, پڑھ لیں. چلیں میں پیرا 6 چلیے. That ever so frequently attack on journalists and their abduction, including the federal capital territory Islamabad, is another violation of fundamental right which has been raised in the application. It is stated that the Constitution in its Article 19 guarantees. ہمیں یہ پتہ ہے باتیں نا, کوئی پوائنٹ بتا دیجیے. سر یہ صرف وقت 1-2 منٹ لیتا ہوں سر. میں پیرا پڑھ لیتا ہوں, اس کے اندر بڑا ہمیں پتہ ہے, ہم پڑھ کے آتے ہیں کورٹ. سر اس میں پڑھ لیجیے اگر آپ تسلی. اٹارنی جنرل صاحب, اس پہ تو آپ کو ڈائریکشن کل ویسی مل گئی. سر یہ لدی چیز ہے سر. کارنی لیٹ می ریڈ. آپ بتانا کیوں نہیں چاہتے ہیں ہمیں؟ میں سر بتا رہا ہوں, لیٹ می ریڈ, الاؤ می ٹو یور لارڈشپ. کارنی
It is stated that the Constitution in Article 9 guarantees the right to one's liberty and Article 10 of the Constitution safeguard illegal arrest and detention. This matter becomes a matter of concern when the perpetrator are not arrested, and all the more so when it happens under the cameras of the Safe City project. This is very important, Your Lordship. Islamabad. Inability in this regard may suggest incompetence which may constitute dereliction of duty or far worse abetment, which is an offence. Therefore, notice be also issued to the Inspector General of Police Islamabad. हमने पूरा पढ़ लिया, आपसे आगे हमने पढ़ लिया. आधे पॉइंट क्या आपका? अब सर ये है कि the Safe City project इस्लामाबाद में वर्क कर रहा है. आप हमें पॉइंट बता दीजिए प्लीज. पॉइंट ये है कि billions of rupees has been spent on the Safe City project. जो भी जर्नलिस्ट के साथ मामलात हुए हैं इस्लामाबाद के अंदर, आप मुझे समझ नहीं आ रहा है, आप पॉइंट बता दीजिए प्लीज. पॉइंट बताएं, वकील का काम होता है पॉइंट बताना. पॉइंट ये बता रहा हूँ, बिला वजह हमें तकरीर करना, हमने ऑलरेडी नोट कर लिए हैं बातें. ये नेक्सस बता दीजिए ना सेफ सिटी प्रोजेक्ट का मकसद. सेफ सिटी प्रोजेक्ट का मकसद था कि जो लोग दिन दहाड़े इब्डक्ट होते हैं, वाई द सेफ सिटी. तो आप हुकूमत में हैं या नहीं? मैं सर मैं आप मिनिस्टर हैं, प्रोविंशियल केयर टेकर गवर्नमेंट में मिनिस्टर. पर यू कैन नॉट. यू आर हेल्पलेस सर इसमें तो पूरी. यू आर हेल्पलेस. यस ऑफ कोर्स. मेरे खिलाफ एफआईआर है सर. आई एम हेल्पलेस. आई कैन नॉट इनक्वाइरी एफआईआर. Who is the mysterious persons running the country if you are helpless? Everybody knows who is running the country. Don't say these things. For a lawyer it doesn't look good. Yes, of course. Either say I'm a darpoke, I will not say this. ये क्या मजाक बनाया हुआ है सुप्रीम कोर्ट घर में? Everybody knows it. Then say it. Then say it. Sir, if I'm a caretaker. Don't say this, please. Don't. इधर आप एक सेंसेशनलिज्म चाहते हैं तो कर लेते हैं. हम सीरियसली इस मैटर को अटेंड करना चाह रहे हैं. सर हम भी सीरियसली सेंसेशनलिज्म चाहते हैं. Everybody knows it. पता नहीं, I don't know it. आप मुझे बता दीजिएगा. आप एक कंसाइज स्टेटमेंट फाइल कर दीजिए, हम सीख लेंगे आपसे कुछ. नहीं सर आपको. Everybody knows it. भाई ये सुप्रीम कोर्ट, ये अदालत है, ये खड़ा नहीं है, ना पार्लियामान है, ना कोई प्रेस का कॉन्फ्रेंस. आप जाके कर लीजिए वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंसेज जितने मर्जी है. अगर आप, हम तो कह रहे हैं आप मुल्क चला रहे हैं, आप मिनिस्टर हैं, या आप कह रहे हैं बस मैं कुर्सी पे बैठा हूं, मैं तो नहीं चला रहा हूं. सर मैं इधर ऐसी बातें आप कर रहे हैं. मतलब आप अपना मिनिस्टर अपने ही क्लाइंट के खिलाफ आर्ग्यूमेंट. खिलाफ की बात नहीं है सर, मैं हकीकत बता रहा हूं जो आप अगर. अच्छा बस आप बता सकते हैं हकीकत, लिख के देने के लिए तैयार नहीं है. मैं लिख के मैं हकीकत बताना चाहता हूँ क्योंकि किसी को नहीं पता आज तक. सबको पता है सर. मिनिस्टर बनने से पहले आपने ओथ लिया था. यस वो तो वो सर मैं देखें ना, मेरे खिलाफ एक एफआईआर. ये कानून की अदालत है, अगर कोई कानूनी बात करना चाहें तो कर दीजिए. हकीकतें हमें बताते रहिएगा, लिख कर दे दीजिए. आपको फाइल करना है, आज दिन तक आपने कुछ फाइल किया है? सर हकीकत तो यही है कि भाई हमें नहीं हकीकत का पता, हम जो चीज हमारे सामने आएगी उसका पता चल जाएगा. सर ये आपने खुद ही ऑर्डर पास किया होना, योर लॉर्डशिप. माशाल्लाह जनाब, उसके लिए आपको कई दफा कहा ना कि रिपोर्ट कॉल कर ली है कल इनसे. जो भी एफआईआर है उसकी जो प्रोग्रेस रिपोर्ट है वो कॉल की है इनसे. सर ये जजमेंट है. मैं अगर आप प्लीज आप हमें जजमेंट बताइए. सर ये एक दफा रिपोर्ट तो फाइल करने दीजिए अटॉर्नी जनरल को. जब वो फाइल कर देंगे उससे प्रोग्रेस रिपोर्ट पता चलेगी. फिर हम आगे जा सकते हैं ना. जिनकी एफआईआर जो कंप्लेनेंट है उनको कन्फ्रंट होगी ना वो रिपोर्ट. फिर वो बताएंगे कि उसमें इंक्वायरी हुई या नहीं हुई, या क्या इन्वेस्टिगेशन हुई और आगे मामला कहाँ पे गया, कोर्ट में किस स्टेज पे है, चालान फाइल हुआ नहीं हुआ, क्या प्रोग्रेस रिपोर्ट है. ये तो ये बताएंगे ना पहले. तो लेट हिम फाइल द रिपोर्ट फर्स्ट ऑन दैट स्पेसिफिक एफआईआर. ठीक है सर, लेट देम फाइल. If I may, as a matter of procedure now, just something that I wish to draw your attention to. On 20th of August, a two-member bench headed by my Lord the Chief Justice passed the order. Now, after that order, 1 second, I just want to clarify something. कोई filings हुई हैं आज कल? हाँ सर वो फाइलिंग इस वजह से नहीं हो सकी. हमें अभी तक वो लिस्ट ही नहीं देगी कि किन मेंबर्स के खिलाफ, किन जर्नलिस्ट के खिलाफ मुकदमात है. प्लीज आप ट्राई टू अंडरस्टैंड. मतलब प्रॉब्लम ये हो रहा है, नोबडी वांट्स टू डू देयर वर्क एनीमोर. प्लीज रीड द सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट. सर हमने सीएमए बना के अगर आप बनाते रहे, हम पता नहीं आप क्या करें. हमारे पास इनको दीजिए, आप ठहर जाइए प्लीज. अटॉर्नी जनरल, Adani, I don't know what's we yesterday were very careful not to pass an order. Why? Because we were very cognizant of the Supreme Court Practice and Procedure Act. Just go through section कौन सा है इसका?
Okay, section 3. Read the section 3. Exercise of original jurisdiction by the nobody wants to have any concern with the law. I'm surprised. Any matter invoking exercise of original jurisdiction under clause 3 of Article 184 of the Constitution shall be first placed before the committee constituted under section 2 for examination, and if the committee is of the view that a question of public importance with reference to enforcement of any of the fundamental rights conferred by Chapter 1 of Part 2 of the Constitution is involved, it shall constitute a bench comprising not less than 3 judges of the Supreme Court of Pakistan, which may also include the members of the committee for adjudication of the matter. Now we are cognizant of it. This is the law of Pakistan. Now somebody comes and gives a piece of paper here. I mean, we would love to do it. We can't do it. That's why we took an undertaking from you and did not pass an order against you. I mean, if people can't understand this, I don't know. It's very clear cut. And this law has just been telecast to the whole of Pakistan. Now everybody should know about its provisions. Now if someone doesn't want to do it, I mean, and now please, it's not very. नहीं, एक सेकेंड, एक और बात भी बता दें आपको. अभी इसी महीने हमने एक ऑर्डर पास किया है. ये आप देख, ये इनको दे दें, उनको दें. SMG वाले. अभी एक बेल मैटर में एक इशू रेज हुआ था. My lord. Please read paragraph 4 का एंड से पढ़ दें. जी. We cannot ignore the above document, which had been produced before us in court, which purports to be a license of a submachine gun, SMG, which is a prohibited bore weapon. Notifications are also issued by the government exempting the requirement of obtaining licenses or permitting licenses for prohibited bore weapons to certain categories of persons, including chief justices, judges, ministers, parliamentarians, as mentioned in Schedule 1 of the Arms Rules 1924. Next para, the above has raised the following questions. 1. Under what legal authority had the Deputy Inspector General of Police, Mardan Region 1, Mardan, issued the said document which purports to be a license to carry an SMG, which is a prohibited bore weapon? 2. Whether licenses of SMG and other prohibited bore weapons can be issued. 3. If the answer to the above is in the affirmative, the applicable law and procedure and the person who can issue exemptions oblique licenses. 4. The number of licenses, including permits, issued with regard to SMGs and other prohibited bore weapons. 5. The approximate number of SMGs and other prohibited bore weapons in private use in the country. 6. Whether exempting certain categories of persons or granting them the right to obtain licenses for SMGs and other prohibited bore weapons accords with Article 25 of the Constitution, which mandates that all citizens are equal before the law. 7. Whether enabling the easy availability of SMGs and other prohibited bore weapons accords with Article 9, the fundamental right to life guaranteed by the Constitution. Next paragraph. 6. This is the important part. Yes. The office is directed to make a separate file and title it Submachine Guns and Other Prohibited Bore Weapons and register it as a Constitution petition under Article 184(3) of the Constitution with regard to paragraph 4 onwards. The matter prima facie is one of public importance with regard to the enforcement of fundamental rights, including Articles 9 and 25 of the Constitution. Therefore, it be placed for consideration of the committee constituted under Supreme Court Practice and Procedure Act 2023. Now, but stop here. So, yesterday's order, we had very aware that we are dealing with the case of the 2021 SMC4, SMC5 and CP27. And incidentally, this matter came up about the Press Association of Pakistan. So we asked you, and you gave an undertaking on behalf of the federal government, which you are at liberty to do so. But it doesn't mean that the Supreme Court Practice and Procedure Act, which has just been upheld not very long ago, should not be complied with. This order that you read is 17th of January. That's right. And we were expecting something to come, some application and something. Despite that, we had made it clear that personal criticism of judgments is no issue, but we would want to attend to it in a serious manner. I mean, not somebody comes and throws one paper, somebody comes and says something. I mean, I don't know, sort of, I was duped into signing this petition. I don't know what's all these statements being made. I mean, if you file something, if you want to withdraw it, there's a procedure, you file something else.
So Shahzad Sokar Sahab, आप जरा बताएं, because we consider this matter serious, but we cannot pass order till it goes through the committee first. That was the understanding yesterday, that they will file a separate application. You know, we were expecting it. I mean, if someone doesn't want to, we can't force someone to do so. साहब से कहा भी था कि कुछ चीजें रिकॉर्ड पे, कोई CMA कोई चीज आप फाइल कोई कह रहा है जी हमें ये हो गया, हमें वो हो गया, JIT बन गई है। भाई हमें शक्ल तो दिखा देना कोई कागज के टुकड़े की। JIT बन गया, you should know। I mean, नहीं, हम नहीं चीजें देखते हैं भाई, हम जो हमारे सामने आता है ये पहले चीजें होती गई थी, हमें एतराफ करने में कोई बात नहीं, मगर उस वक्त तक इन चीजों का तरीकेकार नहीं तयन हुआ था कि भाई सुप्रीम कोर्ट ले सकती है, चीफ जस्टिस ले सकते हैं, कौन ले सकता है। अब तो कानून ने तयन कर दिया है ना, और वो कानून हमने कहा सही है। अब ठीक है, बात अहम बात है, हम ले लें, हमें बता दीजिए, कमेटी के पास चला जाएगा, आ जाएगा। मगर अगर सीरियसली इसको लेना चाह रहे हैं, अगर एक कोई कागज उधर से दे रहा है उधर से दे रहा है, हम आगे बढ़ें कैसे? हम आई डोंट नो कैसे बढ़े। हम सुमोटो लेंगे, फिर आप ही हम पे एतराज करेंगे कि जी आप ही अपना जो कानून आपने अपहोल्ड किया उसी को आप वायलेट कर रहे हो। तो ये देखिए, ये बड़ा मुश्किल। अब जरा हम कानून पे चलना चाहते हैं। JIT का कोई नोटिफिकेशन भी इशू हुआ होगा? अभी हमें क्या पता, हमें कोई किधर से पता होगा? वो कल को अटॉर्नी जनरल हम पे एतराज कर देंगे, जी आपको क्या पता। टुकड़ा तो लिया है सामने। JIT का नोटिफिकेशन इसलिए भी जरूरी है कि इन विच लॉ द JIT हैज बीन कॉन्स्टिट्यूटेड। एक सवाल से सवाल उठेंगे भाई, अब ATC के लॉ में तो है। आपको याद है जी, मुझ पे बड़ा भाई, हम केस जो हमारे सामने, हम उस पे तो हमने ऑर्डर कर दिए, हमने डायरेक्शन भी दे दिए, बाकी चीजों की चलन की बात का नोट भी कर लिया। अटॉर्नी जनरल गिवन अंडरटेकिंग, वो तो उनके हद तक है, मगर अब हुक्म हम कैसे करें इस बात पे, मजीद कैसे चलाएं? या तो हम खुद इसको क्या करें? सुमोटो भी हमारे पास अख्तियार अब नहीं है। उसका नोटिफिकेशन और जो नोटिस इशू हैं, कोई मॉडल सैंपल नोटिस किसी एक का भी होता तो वो उससे आपको पता चलता है कि इन विच लॉ द JIT हैज बीन कॉन्स्टिट्यूटेड एंड व्हाट एक्चुअली दे आर गोइंग टू इंक्वायर फ्रॉम द जर्नलिस्ट। जी हमें आपकी ताउन की जरूरत है ना, बिकॉज मैं तो जनाब क्या, हाउ डू वी, हम कंसर्न्ड है, मगर कोई तरीकाकार तो अपना लेना। The only way forward is that either they move a proper application attaching those notifications and notices so that the। और ये जो प्रेसिडेंट साहब आपके ना, ये जैसे भी कह रहे थे कि हमें लिस्ट नहीं मिली, बात ये कि वो तो लिस्ट दें ना दें, आपको अपने पास तो पता है ना आपके मेंबरान कितने, उनको वो नोटिस इशू हैं, तो वो मेंबरान से तो वैसे भी नाम खुद पता कर सकते हैं। देयर इज नो नीड के उसमें जरूरी है किसी को तो आई होगी ना। जी यही पाकिस्तान में किसी को आया ही नहीं नोटिस, फिर उसका मतलब वो नोटिस ही फेक है। रात तक आई वाज अंडर द इंप्रेशन दैट सच एन एप्लीकेशन विल बी फाइल्ड एंड अ कॉपी देयरऑफ। देखिए ये जो आपको अभी चीफ जस्टिस साहब ने इसका एक्ट का जिक्र किया है ना, अब ये अपीलेबल ऑर्डर हो गए सारे। जी ऐसे ही है। तो अब हम यहाँ पे बैठ के कुछ करें, उसकी भी अपील होगी। अब इंट्राकोर्ट अपील का जो कॉन्सेप्ट है वो ऑलरेडी अब आपको पता है ना, वो रिवाइव हो गया है। It has to go to the committee first. That is the first thing that happens here. कल we heard it a lot. आज हमने adjourn किया, भाई हमने कोई तारीख नहीं दे दी, कोई महीने बर्बाद की। We can't tell somebody to do something. We can only kind of it's obvious and say it. So I don't know how to proceed further in the matter, because undertaking is there of the Attorney General. You are standing by your undertaking. कल होइए कोई गया कोई वहाँ पे FIA के सामने? Sir, नहीं, कल I had asked the JIT to not, or the not to press with the notices yesterday because most of them were here and the court proceedings were underway. So they were adjourned till today, sir. Well, they intend to file it today. So give the latitude. Once the application is before देखें वो कल था, उन्होंने कहा तो वो एडजेंट हो गया आज के लिए। अगर तो आप कोई चीज फाइल करते हैं तो टिल सच टाइम आप उनको रोक देंगे, वो ना कोई भी फिलहाल करे मीटिंग। आप जस्ट अंडरस्टैंडिंग क्यों? We just used our good offices. We even said कि have a meeting. You know, but we can't pass an order, a direction. There's a big difference. Attorney General may do it, he may not do it. So we can only request him. There's a very different thing. We can direct him, and a request is a very different thing. 3-4 दिन 2-3 दिन में आप फाइल कर दीजिए। I don't know how we proceed with what matter. सर CMA तैयार कर ली गई थी, सिर्फ लिस्ट की अवेटेड थी, हमें कल दी जानी थी, नहीं दी गई, फिर हमने सुबह तक इंतजार किया, नहीं दी गई। अभी सर अगर आप हमें 10 मिनट भी दे देंगे। सुन लीजिए, वो क्या मैं नहीं देता आपको लिस्ट की जरूरत नहीं, आप अपने
हम नाम टाइप कर किसी एक को तो नोटिस आया होगा ना पाकिस्तान में, वो नोटिस हमारे पास है सर, सीएमए भी तैयार है, सिर्फ 10 मिनट दे दें। उनकी लिस्ट आप खुद टाइप कर दीजिए ना कि इतने साथियों को आई है, वो ना दें लिस्ट आपको तो वो कोई सर्टिफाइड कॉपी वो आपको फैसिलिटेट करेंगे तो नहीं, इस मामले में नहीं है ना वो। सर अगर 10 मिनट की कोर्ट या तो इसमें हेयरिंग में वक्फा कर ले, हम फाइल कर देंगे क्योंकि सब कुछ तैयार है। करें, हम आपको मना नहीं करेंगे, मगर हम इशू सर सिर्फ ये सीएमए नहीं होगी, वो पिटीशन होगी। Petition will have to be brought. सारे ऑर्डर अब Petition will have to be brought under 184(3). Matter will have to go to the committee, and then the committee has to then. आपको उसको टाइटल चेंज कर दो। अभी ये मैटर था पेंडिंग, तो इसमें कम से कम कुछ प्रोग्रेस हम कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। सर दो चीजें हैं, अगर सीएमए होगी तो वो जाहिर बात है सिर्फ नोटिस किया था, पटिशन होगी, पटिशन तो माशाल्लाह आप लोग तो हमसे ज्यादा कानून आजकल जानते हैं, ठीक है, तो आप ही कर लें, क्योंकि अब वो जमाना चला गया कि वकील से थोड़ा मशवरा कर लो। आई एम श्योर शहजाद शौकत साहब से बात करेंगे, वो आपसे कोई फीस नहीं तलब करेंगे। सारे ऑर्डर अपीलेबल हो गए अब ये इंट्रा कोर्ट अपील में। अब हम अपने ही कानून को वायलेट करने चल पड़े तो आप ही लोग हम पे तनकीद शुरू कर देंगे। हमें तनकीद से इतराज नहीं है, मगर कानून की वायलेशन से बिल्कुल इतराज है। तो actually I was expecting some applications, no application is coming forward. My lord, with your permission. आप भी आ गए। I don't know. सर मेरी रिक्वेस्ट ये, सिर्फ 7 दिन रह गए हैं इलेक्शन में, तो कोई जल्दी नहीं है। आई डोंट नो क्यों हमारे इदारे इतनी जल्दी में कि ये कानून आपस में बात करें ना, आपके इदारे आपकी बस सर सिर्फ 7 डेज का, अगर हमें इलेक्शन के बाद तक के मैटर पेंड कर दें ये पूरा प्रोसेस। देखिए आई थिंक ये मीडिया को कंट्रोल करने के लिए इलेक्शन के बाद तकरीर ना करें प्लीज। अगर आपको कुछ कहना है लिख के दे दीजिए। ठीक है सर, ठीक है। हम ये हम फोरम इस्तेमाल नहीं करेंगे कि आकर के कल का अखबार में खबर लग जाए। आप लिख कर दे दीजिए, तो हम इनसे पूछ भी सकते हैं, जिससे पूछना उससे पूछ लेंगे। सिस्टम तो हम बनाए ना, सही तरह से सिस्टम बने। थैंक यू। तो अगर आप इनको परसुएट करें सदर साहब को, वो हमें कोई जल्दी हम समझे तो वो कयूम सिद्दीकी साहब का वाला केस और वो हैदर साहब का, वही हैदर, अच्छा आए हुए आपको टाइम मिल रहा है ना, 184 में कन्वर्ट कर दो इसको। अगर वो फाइल भी होगा तो हमें कमेटी के पास जाती है। हम चाह रहे थे सिर्फ नोटिस की हद तक अगर वो कर रहे हैं ना, वो तो अभी उन्होंने रोक दिया ना मामले को। सर आज भी बुलाया गया था। अच्छा अब ये हमें एक तरफ से बता दें, कानून पे अमल करेंगे ना, सिर्फ ये बता दें। सर इलेक्शन के बाद भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, हम कब कह रहे हैं। सर इलेक्शन इज अ क्रूशियल मोमेंट, मीडिया को सारे लोगों को कंट्रोल किया जा रहा है सर इसमें। फिर आप सिर्फ 7 दिन की बात। साहब आप यू आर हियर, इट्स गुड, so we can take up your petition and the other 2 petitions, and we can, I don't know, whenever they file, it will immediately go to the committee. The committee generally meets on a Thursday, unless there is some reason why judges are not available. So, because these 3 judges are not the committee. Committees are different. The 3 senior judges are the committee. My lord, my petition actually just merely seeks a balancing of the constitutional rights. It talks about how there is already a Supreme Court. No, what do you want us to do? That's, I mean, I've read your petition. It's very good, but what sort of order would you want us to pass? My lord, I've just, in especially these circumstances, the only thing that we are pressing is कि एक code of conduct से Supreme Court का ordered ही approved एक code of conduct बना था for broadcast media. अब सर Article 19 जो है, it clearly covers content. It doesn't cover one medium to the exclusion of other mediums. It talks about speech overall. But what we have right now is that broadcast media is regulated completely differently. So whatever you can't say on broadcast media, you're able to say on vlog, which makes no sense because Article 19 is equally covers content on any medium. अब मैं ये नहीं कह रहा कि जो broadcast media पे आप नहीं कह सकते। What do you want us to do? The code of like it happened last time, perhaps a direction can be given कि stakeholders बैठ जाएं federal government के साथ और code of conduct जो already बना हुआ है और एक सर कानून भी बनाया था उन्होंने एक unit which law the code of conduct will be made. जी सर code of can the Supreme Court pass such an order? सर पहले भी कैसे ये नहीं आपका ऑर्डर ये नहीं होगा कि legislate मदद कीजिए ना। पेंड्रा का जो code of conduct है वो तो मेरे ख्याल है चैलेंज हुआ था, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अच्छा
ठीक है इसको मिलके, इसका तो कोड ऑफ कंडक्ट पेमरा का 2001 के ऑर्डिनेंस के तहत बना हुआ है सर, बट सर तो पुरानी चीज है, उसके अंदर इतराजात हुए थे मीडिया को, उस पर वो सिर्फ चैलेंज चल रहा था कि आर्टिकल 19 के अगेंस्ट है, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई मिल बैठ के आप कोई कर ले, तो वो एक सेल्फ इम्पोज जो रूल्स एंड रिस्ट्रिक्शंस वो बनाए गए। आई एम सीकिंग अ लेवल प्लेइंग फील्ड, ऑल आई एम रियली सेइंग इज कि सर उस वक्त अगर इक्वली रेगुलेशन होती, या आई वोंट इवन कॉल इट रेगुलेशन बिकॉज़ इट्स आल्सो प्रोटेक्शन ऑफ स्पीच, रियली इट इज प्रोटेक्शन ऑफ स्पीच। सर asking you a different question, you are arguing your case. Sir, one second. Sir, I am saying that such a direction can be given because it's enforcement of constitutional rights. What order should be passed? Just a simple question. You are arguing your matter. That the federal government, my humble prayer is that the federal government be directed to sit with stakeholders and make for the same kind of code of conduct that they made for broadcast media to enforce Article 19. Fine. Wishes, if wishes can be, what do they say? Now, please tell us, can we pass such an order? I would believe that's enforcement. Never, you should never begin with a thing with I. Refer to the law. Can we do it? So assist us now. My lord, certainly this honorable court can enforce constitutional rights. Like we can request the Attorney General meet the President of the Supreme Court. We can certainly do that, but can we pass an order directing? That's a big difference. Sir, अगर ये भी हो जाए तो ये खुद भी सब तैयार हो। देखिए, there must be some law for regulating the YouTube. If there is no law, then there is no the rules. There is no law है। एक सेकंड, ये बात कर रहे हैं जी सर। सर, बात ये enforcement of constitutional right के लिए सर पेमरा है, उसको उन्होंने रेगुलेट किया है ऑर्डिनेंस के तहत ना, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी ऑर्डिनेंस 2002 का ही है, तो उसके अंदर वो चीजें बन रही है ना। इफ देयर सम लॉ दैट शुड बी रेगुलेटेड और शुड रेगुलेट दी, सर है डिजिटल मीडिया पे लॉ है, डिजिटल मीडिया पे पाकिस्तान में कौन सा लॉ, ये बताइए ना। उसके ऊपर कोर्सिव एक्शन लेने के लिए तो है, उसको रेगुलेट करने के लिए नहीं है ना। आप पिका में आप उसको कर तो रहे हैं, बट वो आप हाउ टू रेगुलेट दी यूट्यूब, ये तो बताइए आप। My lord, there are laws. The only problem is that they don't come with specificity, and they are more on the criminal side. And problem होती है कि कोई gray area नहीं है, या तो they say wild things on digital media and wilder things happen to them, and that's the problem, isn't it? Because there isn't that legal framework. देखिए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या यूट्यूब वो 2002 का जो डिफेमेशन ऑर्डिनेंस है उसमें तो कवर होते हैं, बिकॉज पब्लिकेशन का मतलब इंटरनेट भी है उसके। सर पेज 15 पे मैंने वैसे टेबल लगाई हुई सारे लॉज की, पेज 15 पे सर अगर आप नंबर 3 पे देखेंगे, सो देयर इज दैट रिमूवल एंड ब्लॉकिंग ऑफ अनलॉफुल ऑनलाइन कंटेंट, प्रोसीजर, ओवरसाइट एंड सेफगार्ड रूल्स ऑफ 2020। सर पेज 15 है पिटिशन की। दिस इज नाउ कॉन्स्टिट्यूशनल पिटिशन 27 ऑफ 2022। नहीं, वो लॉ कौन से आप कह रहे हैं सर? ये है रिमूवल एंड ब्लॉकिंग की जो फर्स्ट प्रेयर है ना, माय लॉर्ड, डायरेक्ट्स द फेडरल गवर्नमेंट टू प्रिपेयर एंड इम्प्लीमेंट स्पेसिफिक कोड ऑफ कंडक्ट। Tomorrow you will be the first to criticize us that this is amounts to censorship. Okay, and the Supreme Court had no jurisdiction. Please assist us on these points. I mean, what power are we exercising? Are we legislating? Yes. Are we interpreting a law? Yes, we can do that. If there's some provision in the law, we can maybe interpret it in your favor. But if there's no provision in the law or in the Constitution, how do we go ahead with it? We can certainly request all stakeholders to meet and come up with a code of conduct. So, but does it translate into a binding judgment of the Supreme Court that can be acted upon then or not? If someone says, I won't, then federal government says, I won't do it. Then what do we do? My lord, we issue them a contempt notice on what basis? For a wish? My lord, my humble submission is that the enforcement of constitutional rights like Article 19, which not only put restrictions but inherently regulation is required. Sorry. So, sir, abhi to sir, aap jis tarah aapne baat ki, I think from whatever casual talk I've had with everyone is ready to sit down and talk about it. We can start with that. Not in this case, my lord. Not in this case. एक सेकंड मती साहब, ये बात कर रहे ना, थोड़ा सा हम एक दूसरे का लिहाज तो रखें ना। हैदर वहीद साहब, देखिए, अगर आपको कैजुअल टॉक्स करना है तो पिटिशन लाने की तो कोई जरूरत नहीं है ना। मैं कह रहा था, वो आपको कौन मना कर रहा है? आपकी पिटिशन देखिए पेंडिंग है 2022 से। ठीक है, हम 24 में आ गए जी। जितनी मर्जी आप टॉक्स कर लें, आपको मना कर रहा है। हम पूछ रहे हैं कि अदालत
क्या कर सकती है? आपकी मदद चलें, ये भी कर लें, मदद भी करना चाहते हैं, हम करें कैसे? ये बताएं हम किस किस्म का ऑर्डर पास करें? My Lord, my humble submission is that the enforcement of Article 19 and the cognizance... बताएं ना आपने, अच्छा, enforcement of which provision of Article 19? ये भी आप देखें, ऐसे गोल्ड ऐसे ना कर देना। Article 19 में बहुत कुछ लिखा हुआ है। सर मैं कह रहा हूँ read Article 19, my Lord. ये आपने लगाई है कॉपी? आपको एक मिनट से मैं वैसे पूछ रहा हूँ, इन द मीनवाइल में पढ़ लूँ। ये रिमूवर एंड ब्लॉकिंग ऑफ अनलॉफुल ऑनलाइन कंटेंट प्रोसीजर ओवरसाइट एंड सेफगार्ड रूल्स 2021। My Lord, I'm just going to provide, sir, I'll provide. इसे किताब में पैमरा लॉस के आप बता दें क्या कौन सी आर्टिकल 19 में एक पार्ट है जो कि इजाजत देता है, दूसरा पार्ट है जिसमें मुमानियत है। आप मुमानियत कर रहे हैं या इजाजत वाली बात कर रहे हैं? सर मैं कह रहा हूँ आर्टिकल कह नहीं, कानून क्या कह रहा है? My Lord, कानून ये कहता है, पढ़ लीजिए प्लीज। जी सर, मैं आर्टिकल, आजकल फैशन हो गया बगैर पढ़े चीजें आर्ग्यू करो। भाई देखिए, आर्टिकल 19 के दो पहलू हैं। एक पहलू कहता है सबको इजाजत है, फिर उसके बाद वो जाके रुकावट डाल देता है। सब्जेक्ट टू रीजनेबल। I'll read आर्टिकल 19। हाँ, तो अब हमें आप कह रहे हैं आर्टिकल 19 को इन्फोर्स करें, तो कौन सा पहलू? दोनों पहलू करें, एक पहलू आप पढ़ देते ना। Freedom of speech. Every citizen shall have the right to freedom of speech and expression, and there shall be freedom of the press, subject to any reasonable restrictions imposed by law, in the interest of the glory of Islam or the integrity, security or the defense. एक सेकेंड, तो एक हो गया इंटरेस्ट ऑफ द ग्लोरी ऑफ इस्लाम, पहला रुकावट। दूसरा इंटेग्रिटी, सिक्योरिटी और डिफेंस। इसको एक ही हम तस्वुर कर लेते हैं, दो। और एनी पार्ट देयरऑफ, फ्रेंडली रिलेशन। ये हो गया तीसरा रुकावट आ गई, तीसरी रुकावट आ गई। पब्लिक ऑर्डर, ये चौथी रुकावट आ गई। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, डिसेंसी और मोरालिटी, इसको पांचवी रुकावट कर लें। और इन रिलेशन टू कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, द कमिशन ऑफ और इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस। तो 7 रुकावटें आ गई। आईन ने बनाई है, जरा ये हम वजाहत करते चलें, हमने नहीं बनाई है। बिल्कुल ठीक है। अब आप जब कह रहे हैं इन्फोर्समेंट ऑफ आर्टिकल 19, तो अब आप बताइए कि आप फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन की बात कर रहे हैं, फ्रीडम ऑफ द प्रेस की बात कर रहे हैं, जो 2 राइट्स दी गई हैं, फिर इसमें ये आ गए रिस्ट्रिक्शंस। तो आप ये सिर्फ ये बात करना कि आर्टिकल 19 की इन्फोर्समेंट से मुराद आपकी क्या है? My Lord, my humble submission is that the entire article is being applied to broadcast media, but not to digital media. We agree. What do we do? आप तो ये चाहते हैं कि इसको रेगुलेट कर लेना। You want कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ये जो YouTube है, इसको रेगुलेट किया जाए, ये आप कह रहे हैं ना? इसको मैं कह रहा हूँ जो कोड ऑफ कॉन्डक्ट एक बना हुआ है, सुप्रीम कोर्ट अप्रूव्ड है, उसको जो है डायरेक्ट किया जाए, स्टेकहोल्डर्स बैठ के वो कोड ऑफ कॉन्डक्ट। आपने जो बात कर दी ना, सुप्रीम कोर्ट अप्रूव, कानून की बातें कर लेते हैं ना। नहीं, वो आप सिर्फ ये बताइए, माशाल्लाह you're a senior constitutional lawyer. Now, what do? We agree with you. Let's even go that far. How do we do it? After all, everything must be done in a particular way. Yes, my Lord, to enforce constitutional rights of Article 19 and 25, and in keeping with balancing of constitutional rights, a direction can be given to the federal government. It is, after all, an executive. You're not asking for legislature to make law. A direction can be given to the federal government that made the first code in any case. It was the federal government. One second, please argue this case. I don't know what that case is or what the first case is. Please argue this case. Okay, let's go step by step. Okay, let's assume this direction is given. Second assumption is, let's assume federal government does what? It sits with stakeholders and makes a code of conduct. Who? It can be journalists, lawyers. They can decide. Please देखिए ना, don't just say. आपका डायरेक्शन तो सिर्फ फेडरल गवर्नमेंट को। ये देखिए ना, ये स्टेक होल्डर्स वो अपने 4 दोस्तों को बिठा लेंगे अपने साथ। हाँ जी, ये स्टेक होल्डर्स हैं। अब आप ये ऐसी बातें जब आप करें, कोई चीज लाए अदालत, तो सोच समझ के करें ना कि ये अब बता दीजिए वो क्या हम करें आगे। पार्लियामेंट हैज टू मेक द लॉ। अब तो फिर वो पार्लियामेंट कल हम पे कह रही कि जो सुप्रीम कोर्ट ने हमारे इख्तियार इस्तेमाल कर लिए, ये हमारा काम है। तो ये दरख्वास्त आप अगर सारे मेंबरान पार्लियामेंट को भी आने वाली है, उनको भेज दीजिए, शायद तो बना दें आपके लिए कानून, हमें नहीं पता। सर मैं लेजिस्लेचर के लिए डायरेक्शन नहीं मांग रहा, मैं फेडरल गवर्नमेंट के लिए कह रहा हूँ कि कोर्ट उन्होंने पहले भी ब्रॉडकास्ट का बनाया, डिजिटल का भी बना दे। के लिए कोई सपोर्ट ऑफ लॉ तो चाहिए ना। अगर अटॉर्नी जनरल ने बात कही तो नहीं है,
اگر انہوں نے کہہ دی ہم نہیں کرتے یا ہم آئین کے تابع ہیں اور ہمارے پاس یہ اختیار ہی نہیں ہے. سر پی ٹی اے ایکٹ اور پیکا میں بن سکتے ہیں, یہ انڈر رولز بنانے کی جہاں پاور ہے وہ گورنمنٹ آلریڈی جرنلسٹ کو جو ہے جس طرح سے ایکٹ کر رہی ہے. ایک سیکنڈ آپ سنیں گے نا ذرا ان کی بات. نہیں آپ لوگ تشریف رکھیں 2 منٹ, ہم ذرا قیوم صاحب ذرا آپ دونوں تشریف رکھیں, ایک ایک کو سنیں گے, آپ کوئی فکر نہ کریں, کوئی نہیں جائے گا جس کو نہیں سنے. My lord. So, my lord, there is statutory law under which this code can be made. Exactly. Dekhe, you have hit the nail on the head. Yes. There is statutory law. Yeah. To give us some statute to help you. Yes. Pakistan Telecommunication Reorganization Act jo hai. Sir, I would rely on the PTA Act. But it took a long time to come here. Sally. Gee, with the provision. Read it. Yes. Provision. My lord, اس میں I will however submit, and this is let's read it. جی سر وہ اس پہ آ رہا ہوں. Sir, it seems I'm just making a submission, sir. Sir, I'm just making a submission that at this point in this environment it seems like everyone is very sensitive about this environment. یہ کوڈ تو سر اگلے 6 دن میں ویسے بھی نہیں بنے گا. Forget it. The environment. We decide cases. We don't care about environment. میں تو سر اپنا You like our decision, you don't like it, fine. نہیں سر, میں اس environment میں آپ اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں انوائرمنٹ کو دیکھتے ہوئے فیصلے نہیں سر, میں کہہ رہا ہوں میں تو کنسیشنری بات ایز اے پٹیشنر کر رہا ہوں کہ میں تو اس چیز کے لیے بتایا, کیونکہ 6 دن میں تو کوڈ ویسے بھی نہیں بنے گا. اگر یہ چاہیں تو رکھ لیں بعد میں 8 تاریخ کے بعد, کیونکہ دس از سم تھنگ وچ از اے ویری امپورٹنٹ ایشو بٹ ناٹ نیسیسرلی سم تھنگ. انکار کب کر رہے ہیں؟ جی سر, ہم آپ سے انکار کب کر رہے ہیں؟ ہم صرف کہہ رہے ہیں ہمیں طریقہ کار بتائیے. جی سر, ہم اگر آپ سے انکار کر رہے ہوتے کہ امپورٹنٹ نہیں ہے ٹھیک ہے بات ہے, ابھی تو آپ سے کہہ رہے ہیں چلے مفروضے کے طور پہ ہم اگری کر رہے ہیں. میں اس میں سر ایک جو ہے وہ سارے قوانین جو انیبلنگ پروویژنز ہیں جس کے تحت کوڈ بن سکتا ہے ٹو انفورس دیز کانسٹیٹیوشنل رائٹس, سر وہ ایک آپ کو ریٹن سبمٹ کر دیتا ہوں کہ تاکہ جو آپ کر دیں. آپ کو ٹائم چاہیے؟ جی سر, وقت چاہیے. جی سر, میں سبمٹ کر دوں گا. سچ جی سر, اس کو اچھا چلیے ٹھیک ہے, پھر اگر آپ کو وقت چاہیے اگر یہ ذرا یہ ہماری رہنمائی کیجیے. بالکل ٹھیک, کیونکہ وکیل کا کام ہوتا ہے آئین اور قانون کے حوالے سے رہنمائی کرے جج کو. میرے خیال میں یہ ہونا چاہیے, اور میرے خیال میں میں بھی بہت سارے خیالات رکھتا ہوں مگر تابع ہوں آئین اور قانون کے. بالکل ٹھیک ہے. آپ کتنا وقت چاہیے آپ کو اس چیز کرنے میں؟ سر آئی تھنک 10 days 1 week. ٹھیک ہے, ایک درخواست آ رہی کہ الیکشن کے بعد کرنے, ہم ان سے بھی پوچھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے سر, ایسے ہی دیکھیں یہ جلد بازی میں ایسی چیزیں نہیں کرنا چاہیے. اب اتنا عرصہ گزرا ہے, جہاں تک وہ اسپیسیفک کیسز تھے وہ تو ہم نے ان کو کہہ دیا ہمیں رپورٹ دیجیے. ہم اگر کوئی ایسی اسپیسیفک چیزیں وہ فوراً کر دیتے ہیں. اگر کوئی ایک دیکھیں امپلیمنٹیشن آف اے ججمنٹ وہ اگر شاید ہو سکتا ہے ان کی بھی درخواست آ جائے, پھر 184 کی کمیٹی میں بھی چلا جاتا ہے, پھر اس کو بھی لگا دیتے ہیں. چلے اب آپ بات کر رہے تھے, مطیع اللہ جان صاحب تشریف لائیے. تھینک یو مائی لارڈ. مائی لارڈ, میری پہلی ریکویسٹ تو یہ ہے کہ یہ جو کوڈ آف کنڈکٹ کی ایشو ہے یا پٹیشن ہے, اس کو کلب نہ کریں ہمارے اس پریزنٹ کیس کے ساتھ, بیکاز دیر از اے کوئرسو انوائرمنٹ, اور اس کوئرسو انوائرمنٹ میں کسی قسم کے ضابطہ کرے گی ہمارے. ایک سیکنڈ آپ کو ایک بات روک لوں. یہ جو کیسز ہیں 3 کیسز ہم نے کچھ کلب نہیں کیے, یہ چلے آ رہے ہیں 7. یہ کم از کم ہمیں نہ کہیں کہ ہم نے کلب کیے, کیونکہ چلے آ رہے ہیں 7. اب اس کو ڈی لنک کرنا ہوگا. اب کوئی کسی کی درخواست آئے گی ہم دیکھ لیں گے. اس موقع پہ یہ کلبڈ ہیں, کافی آرڈرز بھی پاس ہوئے ہیں. تو اب ہم یہ اچھا ٹھیک ہے, اگر آپ کو درخواست دینا آپ دے دیجئے کہ ہم اس کو کر لیں. تو کم از کم اب کیوں کلب ہوئے, مجھے سارے آرڈرز پیچھے پڑھنا ہوں گے کہ وجہ کیا تھی. اچھا دوسری بات بھی آپ دوسری بات بھی کر دوں, کل آپ نے ایک بات اٹھائی تھی کورٹ میں, ہم نے پھر بھی سن لیا. آپ نے ذکر کیے تھے ایک صحافی کا کیس, ارشد شریف. وہ میں نے چیک کیا, وہ 5 ممبر بینچ کے پاس چل رہا تھا. اب کیوں چل رہا تھا 5 ممبر بینچ کے, کیا وہ چینج ہو کے 3 ممبر بینچ کے پاس ہو سکتا ہے؟ اب وہ اتنا وقت نہیں تھا کیونکہ اس میں بہت سارے آرڈرز ہوئے. 3 ممبر تو چلے گئے نا. تو
अच्छा, उसमें दूसरी बात ये है, उसमें मैंने देखा कि उनकी वालदा मोहतरमा और उनकी बेवा दोनों के वकील हैं। जिस केस में वकील अपीयर हो रहे हैं, आपका मुनासिब नहीं है उसमें आना। वो उनको कोई बात है, अर्जेंट एप्लीकेशन देना है, वो दे सकते हैं। यकीनन वो हमसे ज्यादा बेहतर कानून समझते हैं, और वो अगर देना चाहें, अब फिर उसको देखना होगा कि वो अगर इसके साथ लगाएंगे तो 3 मेंबर बेंच है, अब हम कर भी सकते हैं या नहीं। तो ये इसमें काफी वक्त, मगर मैंने सरसरी तौर पे देखा 5 मेंबर बेंच। थैंक यू वेरी मच। ये बात तो आपकी हो गई। अब आखिरी बात बता दें या कोई और बात है? सर क्विकली ये कह रहा हूँ कि ये 7 दिन रह गए हैं इलेक्शंस में, ये सब मान रहे इस बात को। सो व्हाट आई एम सेइंग इज के इसके बाद ठीक है, सही मुनासिब बात है के बाद सारा मगर हम सुन लें इनको, सदर साहब को सुन करके, और सिद्दीकी साहब को इतराज नहीं अगर 7 दिन के बाद। जी सर, एक आखिरी रिक्वेस्ट है। ये मैंने एक मई 3, 2014 को मैंने एक आर्टिकल लिखा था, शेल नॉट कोर्ट फॉर कोर्ट रिपोर्टर्स। दिस इज जस्ट फॉर द रिकॉर्ड, अगर आप चाहें तो इसको देख आप कहीं फंस तो नहीं जाएंगे? मैंने ये 2014 में ये आर्टिकल लिखा था। सोच लीजिए आप फंस तो नहीं जाएंगे उसमें। सर मैंने 2014 के लिखा था, जाहिर बात है फंस तो नहीं जाएंगे सर। जजेस और जर्नलिस्ट हमेशा अच्छा, अगर आप सर माजी के फैसलों पे हम दोनों फंसते हैं, जो हम करते रहे माजी में। नहीं देखिए, आप शायद फंस जाएं इसमें। मैं आपको शर्मिंदा नहीं करना चाह रहा था कि आपको इसका हवाला दूं, मगर नहीं सर आपकी बात ठीक है। आई एम विलिंग टू फेस इट सर, नो प्रॉब्लम। अगर इसी को कर दें तो आई विल बी देयर टू फॉलो इट। ये देखिए, बहुत सारे बहुत अच्छे पॉइंट है। ये मेरा काम नहीं है इससे मैं एग्री करूं या ना करूं। जी सर, मगर अभी हमें ढांचा चाहिए कि ये है कानून की अदालत, कि हम ऐसा हुक्म कर सकते हैं या नहीं। फिर सवाल होगा कि कैसे करें। बस सर इस कोर्सिव माहौल में ज़ाब्ता अखलाक के ऊपर बात तो मेरे ख्याल में करना वैसे ही है कि किसी भी चीज पे अंगूठा लगवा लें आजकल सहाफियों से आप, क्योंकि इतने बड़े नोटिस जारी हुए हैं, तो अब तो हमारे नुमाइंदे किसी भी चीज पे अंगूठा लगा देंगे। तो मेरे ख्याल में इसको डीलिंग करना बड़ा जरूरी है सर। इस केस को अलग करने हम सुन लेंगे ना, शायद ये नाराज हो जाए हैदर वहीद साहब, उसमें आप पार्टी नहीं है, या तो आप पार्टी बनने की दरखास्त दें, क्योंकि अभी आप स्ट्रेंजर हैं टू द प्रोसीडिंग्स। सर मेरा नहीं ये देखिए, ये हम आपको फिर भी सुन रहे हैं, मगर टेक्निकली स्पीकिंग हम आपको नहीं सुने। सर मैं अपने केस के वाले से एक रिक्वेस्ट कर लूं, अगर वो मेरा केस जो अलग से लगा हुआ है किडनैपिंग वाला, उसको इस केस का नंबर क्या है? सर एसएमसी वो सुमोटो नोटिस था सर 2021 का है। ये नंबर आपको पता है? आई एम सॉरी सर, वो अब इतना पुराना हो गया है कि हमें भी नहीं याद, आपको भी नहीं याद। इंसान अपने केसेस के नंबर याद रखता है। तो बस आप उसे अलग से सुने सर, उससे इससे आप अपने किसी साथी से पूछ लें या कंप्यूटर में चेक कर लें, नंबर हमें बता दीजिए। मुझे सिर्फ ये खदशा है कि इस केस में अगर हम समझ गए सामने हम जाते हम समझ आप कह रहे हैं कि कॉन्ट्रडिक्टरी ऑर्डर ना हो जाए। यही बात है ना सर, मुझे ये खदशा है कि जिन लोगों पे इल्जाम है या हम लोग अपनी स्टेटमेंट में लगा रहे हैं, वही लोग हमें जेआईटी में बुला के ये एफआईए के नोटिस में अगर तफ्तीश करेंगे ना, तो फिर बड़ी कंट्रडिक्शन हो जाएगी, हम पे प्रेशर होगा कि वो केस विड्रॉ कर लें, इस केस में आप चेक करें। एक मिनट ठहरिए, साल याद है आपको? जी साल याद है? 2021 सर। किसी को नंबर पता है आपके साथी बरादरी में? क्रिमिनल ओरिजिनल 48 of 2020 सर। क्रिमिनल ओरिजिनल कंटेम्प्ट नोटिस 48, ये तो कंटेम्प्ट नोटिस जी जी, उसके साथ ही सर क्लब नंबर बताइए। क्रिमिनल ओरिजिनल 48 of 2020, ये कंटेम्प्ट 48 of 2020 सर, उसके साथ एक क्लब हुआ था। अच्छा अब ठीक है, बस समझ गया आपकी बात, बस समझ गए। अच्छा ये एक बात जो, अच्छा आप कुछ फरमा रहे थे? हाँ क्या आप कुछ कहना चाह रहे थे? नहीं इनसे पहले प्रेसिडेंट साहब, जो प्रेसिडेंट आप हैं। जी सर, हमारी तो रिक्वेस्ट सिर्फ ये थी कि कोर्ट ने कल ऑब्जर्वेशंस भी दी थी नोटिस की हद तक, लेकिन नोटिस अभी तक विड्रॉ नहीं हुए। आज भी काफी सारे दोस्तों को बुलाया गया। अब कोर्ट की ऑब्जर्वेशन है कि जनाब उसके लिए सीएमए फाइल होनी चाहिए थी। सीएमए फाइल आप ये हमारी बिल्कुल ऑब्जर्वेशन नहीं है। नहीं कोर्ट ने आपको नाराजगी की कोई पिटीशन आपको फाइल करनी चाहिए ना। ये 184 आपसे बार बार कह रहे हैं कि अपीलेबल बन गई है। पिटीशन तो ब्रॉडर उसमें आ जाएगी ना, तो वो कर देना आप, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। अभी हमारी रिक्वेस्ट सिर्फ और सिर्फ जो कल आप नोटिस जारी हुए हैं जिनके ऊपर प्रेशर है कि जनाब फौरी तौर पर आए, जिन दोस्तों ने अपनी बीट्स कवर करनी थी, किसी ने अडियाला जेल जाना था। अब आप मुझे एक सवाल का जवाब दे दीजिए सर। हमने अगर ऑर्डर पास किया तो हम ये बता दीजिए हम इस तनकीद से कैसे बचेंगे कि हमने कानून की खिलाफवर्जी कर दी?
बता देना, हम कर देते हैं ना। जैसे इनसे हम पूछे थे हैदर वहीद साहब से कि भी अब एक सेक्शन 3 हमने आपको भी पढ़ के सुनाया है, उस कमेटी के पास जाता है। अगर हमने ऑर्डर कर दिया तो आप ही लोग सबसे पहले तनकीद करेंगे कि आपने आइन और कानून पे का तहफ़्फ़ुज़ करने का हल्फ उठाया और खुद ही कानून तोड़ रहे हैं, जो कि खुद फुल कोर्ट ने कुछ दिन पहले ही उसको सराहा है। सर अभी अब मुझे समझ नहीं आता, मुझे अगर इसका जवाब दे दें तो मैं अभी ऑर्डर कर देता हूँ। सर मैं इसी का रास्ता निकालने की कोशिश कर रहा हूँ कि अभी अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा कि वो अगर खुद कर लेते बहुत आसान है, एक पिटीशन फाइल कर दो। सर वो बिल्कुल है। नहीं आप देखिए, बात सुनिए साहब, आप पिटीशन फाइल करें और वो जो कल इन्होंने अंडरटेक किया था अटॉर्नी जनरल ने, उसके बाद कुछ हुआ तो नहीं ना? सर मेरी एक रिक्वेस्ट बात तो सुन लें पहले सर प्लीज। एक वो उसको कंटिन्यू कर लेते हैं भैया, इलेक्शन नहीं हो रहे हैं अब, जब तक इलेक्शन तक का टाइम है सके हमने अंडरटेकिंग दी, उनको बोले अभी रोक दे उसको, 4-5 दिन की बात है, उसके बाद फिर यही रिक्वेस्ट है। वो ऑर्डर में हम नहीं लिख सकते क्योंकि हम समझते हैं क्या चीजें हम कर रहे हैं। चलें, आप क्या कहना चाह रहे थे कईम साहब? ये सर सवाल तो एक ही है कि क्या सहाफियों पे कानून लागू होता है या नहीं होता है? क्या जर्नलिस्ट पे कोई कानून लागू होता है या नहीं होता है? ये भी जर्नलिस्ट पे बहुत कानून लागू होते हैं। तो हम भी सिटीजन है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जो है वो, इसीलिए जहाँ आपकी पिटीशन पे तो हमने फौरन ऑर्डर कर दिए जी। अब जो दूसरे मसले आ रहे हैं वो हमारे सामने अगर कोई ले आए ना फॉर्मल तरीके से तो अच्छी बात होगी। हमने तो इनफॉर्मली इनसे बात करके अंडरटेकिंग भी दिलवा दी। तो अब आप अपना केस में कोई बात और करना चाहते हैं तो बताइए। जी इसमें क्योंकि अभी ये मीडिया रेगुलेट करने के हवाले से कर रहे थे बात और सारी चीजें, वो जब आएगी तो उस पे एक बहुत ज्यादा हमारे साथ एज एन ऑर्गेनाइजेशन हमारे साथ क्या होता रहा, वो एक टेस्ट केस है। अदालत जरा उसके भी फैक्ट्स देख ले कि किस तरह से जर्नलिस्टों को जो कुछ हुआ वो हम देख रहे हैं ना। अब आप कुछ और मशवरा दे दें कि ये ऑर्डर पास कर दें आपके केस में, वो हम कर सकते हैं। नहीं वो तो जाहिर है अभी चीजें सामने आएंगी तो फिर हम उसके बाद आगे चलेंगे, क्योंकि फंडामेंटल हमने उनको 2 हफ्ते उन्होंने वो 2 हफ्ते में आते हैं तो 2 हफ्ते में देखें क्या कहते हैं फिर। बिल्कुल, मगर उसमें कोई और पहलू रह गया। एक बात निशानदेही की कि अफसार आलम साहब का नाम रह गया था, वो बस हम ऐड कर देते हैं। और कोई बात है तो बता दीजिए। बाकी सब जो चीजें सामने आएंगी, कुछ चीजें थी जो आपके गोशे गुजार करनी थी। जब हम दूसरों को कहते हैं ना कानून पे अमल करो, नहीं बिल्कुल ठीक तो अदालत तो सबसे ज्यादा करना चाहिए ना। तो इसलिए आप शायद समझें कि वो हम फलां ऑर्डर नहीं कर रहे हैं, फलां ऑर्डर नहीं कर रहे हैं, मगर अब हम भी कानूनी किताबें हैं। नहीं कानून गलत है, डेफिनेटली कोर्ट हवा में तो कोई ऑर्डर नहीं कर सकती, जाहिर चीजें आएंगी। तो कम से कम जो है वो इतना जू कर दिया जाए कि जो नोटिस हैं जो इलेक्शन के बाद तक जरा उसको जरा देखिए, बहुत से लोगों को बहुत सी नोटिस आई हैं और उन लोगों ने तो कोई एतराज नहीं किया जाने के लिए किसी इदारे में। बिल्कुल, अब शायद आप बात समझ गए हो, शायद ना समझे हो। तो जब उन्होंने अंडरटेकिंग दे दी आपको, फिर आपको मसला क्या है मुझे समझ नहीं आ रहा है। वो अंडरटेकिंग करवाई उनसे, हमने देखिए हमने मोहतात तरीके से ऑर्डर नहीं किया था, हम समझते थे हम क्या कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक बात है, ठीक है। बहरहाल कोई भी हम पे तनकीद करने में कोई फर्क नहीं है, क्योंकि फिर हमने आइन और कानून पे चलेंगे। अब इनको दोबारा कह देते हैं यू स्टैंड बाय योर अंडरटेकिंग। कब तक की आपकी अंडरटेकिंग? ये ओपन एंडेड अंडरटेकिंग है। आवाज एक बुलंद, आप थोड़ा सा ऐलान कर दीजिए अपनी अंडरटेकिंग का ताकि सब सुन लें। My lord, undertaking as recorded in paragraph 3 of yesterday's order stands. सर वो अंडरटेकिंग सर दूसरी हद तक है। वो अंडरटेकिंग ये है कि किसी की क्रिटिसिज्म के ऊपर उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। हम ये चाह रहे हैं कि आप चाह रहे हैं ना बहुत सारी चीजें। सर रिक्वेस्ट है सर, नहीं रिक्वेस्ट नहीं करें ना, आप मुझे कानून का हवाला दे देना सर। अब देखिए आप के साथी आपके साथ खड़े हैं सर, वो एक साथी हट गए उनसे कि वो ब्रांच भी फाइल नहीं हुआ, वो प्रोसीजरल मैटर है। नहीं सर वो अच्छा वो इतने नाराज हो गए, उन्होंने कहा मैं तो इससे दूर ही हो जाता हूँ क्योंकि प्रोसीजर कंप्लाई नहीं हुआ। अब हम आपसे अब आप कह रहे हैं कि कानून को ना अप्लाई करें। सर मुझे 1 मिनट दीजिए। प्लीज आप पता नहीं क्यों नहीं आप अपना व्हाई डोंट यू हेल्प योरसेल्फ। सर शायद मैं अपनी बात समझा नहीं पा रहा। मैं समझ गया हूँ, आप सिर्फ बता दें कौन से कानून के तहत हम कर रहे हैं बस। सर अटॉर्नी जनरल साहब ने कल के नोटिस जो थे हमें कहा गया कि हमने विड्रॉ कर लिए, दोबारा जारी करेंगे। मुझे नहीं, मेरे सामने नहीं सर, मेरे सामने ये बात बिल्कुल नहीं हुई है। नहीं दोबारा जारी करेंगे। नोटिस है, उसका एक प्रोसेस है। सो अगर वो विड्रॉ करना चाहे सर
सर विड्रॉल के मतलब है कल की डेट। अरे हाँ ना, वो कल की डेट तारीख जो थी वो गुजर गई, तो नई डेट आपको देंगे ना। यही बात हम कह रहे हैं सर, जितने नोटिस अब तक जारी किए गए हैं वो तमाम नोटिस इलेक्शन के बाद बुला लें साहब, बस इतनी रिक्वेस्ट है तमाम लोगों को इलेक्शन के बाद। बात तो करने Attorney General has right of audience in the courts of Pakistan before every lawyer even. My lord, yesterday I had given this undertaking, which is duly recorded in your order. And it continues. Yes, it continues. It is not time related. Yesterday it was erroneously reported in national media. I also found out that the notices have been withdrawn. Notices can't just be withdrawn. So date may be changed for the new date. Yes. So the undertaking. I have been repeatedly requesting the media. At least I don't sit on orders, issue them after months. We issued the order yesterday. Late hours we sign it. Even we would try to take some time, typos वगैरह ना हो. But we issue it for this very reason. Please read the order. If somebody doesn't even bother, the standard of everybody likes to be more holier than thou. The journalists don't bother to go on the website, and it was uploaded on the website at pretty early in the day, and the following day the newspaper still misrecords it. We can't help it because so much happens when you're talking. You are saying something, he's something, someone may think this is the order of the court. We may ask a question, doesn't become the order of the court till we dictate the order of the court. So I keep requesting the journalists, please read the order. You can criticize us that there was no order uploaded, so we understood this, but that is not applicable when I try to dictate all orders in court, and we try to sign out the orders, uplink them where we are important orders which have people are interested in. Not every order gets uploaded for obvious reasons. So इतना अगर कोई ज़हमत नहीं करे, मैंने तो पढ़ना ही नहीं, मैंने काम ही नहीं करना है, तो अब क्या करें हम? I can't force someone to do it. शहजाद साहब, ये जरा हमें थोड़ा सा आप भी हमें गाइड कर दीजिए इस बात पे. What are your views on this? Since we have requested you. As expressed yesterday, the Supreme Court Bar Association has always maintained that criticism on judgment and a fair comment on the judgment is welcome, because that actually helps us, all of us, improve. But if we come out with stories which are absolutely out of the blues and have no merit in them, then obviously that has to be checked. And particularly the new medium that we have, that vlogs and that YouTubers, I don't know what to do with them, but they are actually saying anything that they want to say, and that cannot be permitted. But that has to be somehow checked, and especially if we come out with fantastic stories about our honorable judges, that is not tolerable, and that is what we maintain. That is what we will always maintain. Criticism is welcome. They can always criticize the judgment, but beyond that, it is uncharted territory. They cannot be allowed to go there. One thing which nobody has addressed, is the truth. It's when you talk about the freedom of the press, does it mean it can print lies? I don't know. I'm just posing these questions. एक सेकंड साहब, आप जरा बात करने देना. तो one aspect has not been addressed at all, and I've been advocating. I keep saying truth will set us free. It's a fundamental pillar of not just Muslim faith, but virtually of every faith in the world. The truth of what we do in courts, we strive towards the truth. What lawyers help us strive towards the truth. What a good journalist does, help us go to the truth of it when it is missing. So truth has gone out from the equation altogether. I don't know, because there are 7 restrictions. I would rather not go into the restrictions part, but at least we should stick on the truth part of it. That was what my Lord's judgment order of 20th of August. This is a matter which orders are very difficult to pass orders on. But it actually points out towards that. Your Lordship referred to Article 227 in the order of the 20th of August. It is reported in 2021.
1602, I believe. 2021 SCMR 1602. That is where the two-member bench judgment was reported. And it actually, essentially, that's what we are saying. There cannot be a bar on reporting what is true. But even if it is very offensive, yes, because then the truth is the best defense to whatever proceedings come against it. But the norms are that the language should be temperate. Yes. But you know what has been happening for the last 2-3 years? For me, as a very humble lawyer of this court, it's very, very disturbing. And particularly how to regulate this and demonizing of the judges. Law let's remove judges. I'm talking generally. Even if it's a story nothing to do with judges, isn't a journalist required to be truthful? And what I've again seen, they will make one statement today. I'm not putting a finger on anyone. Completely exposed, completely wrong story. They don't even have the courtesy to do a retraction. This was a wrong story. And because, I mean, you know, I think at the end of the day, societies crumble if truth does not survive. I mean, that's what happened, because immediately after the court proceedings, the media was sort of exploded with the idea that the notices have been ordered to be withdrawn. And the Pakistan Bar Council took me by, I was scolded because we actually went out. No, now we have one up. We are doing live broadcast. We are grateful, but Mr. Kalpe Hassan is sitting right behind me and watching me, because he said we made a categorical statement in a press conference saying that criticism is welcome, but beyond that, the bars will not tolerate. But we are attending to another matter of the truth of a matter. I mean, it may be very harmful, it may be very hurtful, but it's true. At least that is no longer, I mean, everybody expressing opinions. I mean, what I'm worried about is that even today, nobody is saying, sir, we printed a wrong news, notices were never withdrawn, and it's a misreporting of the Supreme Court proceedings. Who is going to attend to that? Sir, बात ये है, it is for them to, थोड़ा अच्छा, एक दूसरी बात भी आपको बता दें. अब वो भी बात खत्म होती जा रही है. Do you know the reason why the Prophet was sent, which says, the Holy Quran says it, because of his ikhlaq? Yes. I mean, courtesies have gone completely. I mean, this is a central pillar of the faith. Yes. I mean, I was sent to perfect your akhlaq. I mean, there are hadiths on this. So that thing, I mean, it's not that we deprive people to speak, but at least one person's, this is also small courtesy. There are big courtesies and small courtesies. I mean, the kind of things, I don't know. I mean, the kind of arguments you can open BBC, they very strongly disagree with each other. Yes. They don't become abusive. Here, TV channels kind of enjoy, ratings are going up, making money. Fine, it's all connected with the truth. It's committed morals. I mean, you can disagree with each other. Absolutely disagree. I don't agree with your point of view. I mean, we judges, we disagree with each other. We don't start fighting with each other. It's not being criticized at all. Anyway, what is the solution in your mind? We can't reform society. That's not our job. We cannot raise certain questions. There are 3 distinct matters here. One of them is, देखिए जहाँ तक लॉस का है ना, वो it is equally applicable to all the citizens, including the journalists. The defamation ordinance है, contempt of court है, ये तो सब पे अप्लाई होते हैं. उसमें कोई डिस्टिंक्शन नहीं है कि ये सिटीजन पे होगा, ये जर्नलिस्ट पे होगा. वो सब पे इक्वली एप्लीकेबल है. इन दिस केस आपका क्या मौक़िफ़ है कि इसको, जैसे हैदर भाई साहब कह रहे हैं कि जी हम कोई डायरेक्शन दें लॉ बनाने पे, कोड ऑफ कंडक्ट बनाने पे, उस पर आप असिस्ट कीजिए ना एज ए प्रेसिडेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट बार के what can be done. कोड ऑफ कंडक्ट ऑर्डर 2015 में वो है, उसको अगर उसी को देख लिया जाए, या वो पैमरा का है ना, दैट हैज बीन मेड अंडर द लॉ के अंदर रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, कोड ऑफ कंडक्ट है, वो प्रिस्क्राइब है, वो तो उनका पब्लिश किया हुआ है, एज एनेक्स है वो लगा हुआ उनका कोड ऑफ कंडक्ट जो है पैमरा लॉज के अंदर. तो ये देखने वाली बात को आगे बढ़ाते हुए, अब
लीगल प्रैक्टिशनर्स क्या कोड ऑफ कंडक्ट है, उसमें कैनन्स ऑफ प्रैक्टिस हैं पूरी लगी। अब जजेस कोड ऑफ कंडक्ट है, यू नो, अब हम आई डोंट वांट टू बिकम अ रेगुलेटर, so Heather Vaid Saab wants time, so maybe you can also assist and look into this aspect of whether we actually intend to file a concise statement. प्रिंट मीडिया के लिए भी है, प्रिंट मीडिया का भी कोड ऑफ कंडक्ट है, उसके अंदर भी लगा हुआ है वो CPNE वाले जो to this honorable court's judgment that code of conduct was actually framed 2014 Supreme Court PLD। कभी ऐसा हुआ है कि जी कोड ऑफ कंडक्ट में मतलब यहाँ तो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं ना, अगर वकील कोड ऑफ कंडक्ट अबाइड ना करे उसकी लाइसेंस रिवोक हो सकती है, जज को फारिग किया जा सकता है। ये कोई ऐसी कतगन पेमरा में तो है सर, पेमरा में वो तो क्योंकि वो उनके हाथ में उनका बटन है, उसमें शो कॉज भी है, कैंसिलेशन वो उनके हाथ में बटन होता है ना, वो कर सकते हैं, प्रोस्क्राइब भी कर सकते हैं वो। अब ये बातें हमारे चले आप इन पे नोट कर लें, न्यूज़पेपर में भी है, डिक्लेरेशन कैंसिल हो जाता है उसका भी। लॉर्डशिप इस मुल्क के अंदर PPO भी रहा है, प्रेस एंड पब्लिकेशन ऑर्डिनेंस, जिसके जरिए से क्या कुछ हुआ वो आपके इल्म के अंदर है। आपने शायद पढ़ी नहीं, किसने किताब लिखी थी पहली मीडिया लॉज ऑफ पाकिस्तान, आपको पता है? मैं जवाद साहब जी, जस्टिस जवाद ने लिखी थी एक, उनकी भी किताब है, पहली मैंने जिक्र किया, पहली मेरे लिए मास मीडिया लॉज इन पाकिस्तान, जावेद जब्बार जी, आई डोंट नो, मैं गेस नहीं कर सकता, मुझे नहीं पता, 97 में शायद सर किसी में भी लिखा हुआ ना। ये मैंने पूछा था, आपने लिखी हुई है। जावेद जब्बार साहब ने उसमें इंट्रोडक्शन दिया था पॉलिटिकल, अच्छा, मगर सारे मीडिया लॉज जो कलेक्ट किए थे, मैं समझा कोई दो दूसरे से, क्योंकि ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और मीडिया का इशू है, नहीं वो कंपैरिजन है। PFUJ इज हमारी एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी है, अगर इनको इजाजत दे दीजिए कि ये इंटरवीनर बन सकें। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट, इनको ऑलरेडी नहीं नोटिस दिया हुआ है? नहीं, इनको नहीं गया हुआ नोटिस। अच्छा, अगर आप कोई चीज फाइल कर, आप क्या PFUJ पाकिस्तान फेडरल यूनियन, आप उसकी क्या है अपना इसमें ग्रामी? जी, अफजल भट्ट मेरा नाम है जी। और आप क्या हैं? मैं पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट का प्रेसिडेंट। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट, PFUJ कहते हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक है या प्रिंट है या सब है? सब है इसमें एवरीथिंग। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक कब शामिल किया आपने? पहले तो प्रिंट का था ये खाली। यही हमने फिर अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया था, जब ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आया था तो फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हमारा हिस्सा शामिल हो गया। जी, आप कुछ कहना चाहें, आप लिख के तहरीर देते हैं, अगर कोई अभी बात करना चाहते हैं इन जो मौजूदा केसेस उनके मुतालिक, हम सुन लेते हैं आपको। इसमें ऑनरेबल मैं कोर्ट से मेरी 2-3 रिक्वेस्ट हैं। पहली बात तो यह है कि हम बहुत क्लियर हैं कि तनकीद में और ट्रोलिंग में बड़ा फर्क है। तनकीद को हम जायज समझते हैं और ट्रोलिंग को जुर्म समझते हैं। एक तो हमारी वाले से ये बात बहुत क्लैरिटी के साथ हम कोर्ट के सामने रखना चाहते हैं, तो इसलिए मेरा ख्याल है कि FIA ने इस हवाले से ट्रोलिंग और तनकीद को मिक्स ही कर दिया है और इस केस को वो दूसरी तरफ ले गई। ऐसे लगता है कि जैसे ये एक जर्नलिस्टों पर अटैक के लिए ये किया गया था, कोई ट्रोलिंग रोकने के लिए नहीं किया गया था। मीडिया जुडिशरी को हमने सामने कर दिया ना, को पूरी दुनिया में ये हम सब लोग बात कर रहे हैं कि भाई अचानक ये क्या हो गया सुप्रीम कोर्ट में। तो एक तो FIA को ये डायरेक्शन जारी होनी चाहिए कि ट्रोलिंग और तनकीद को अलग कर दे प्लीज। वो तो अंडरटेकिंग उन्होंने दे दी है। ठीक है, नहीं जो नोटिस जारी हो रहे हैं उसमें कम से कम, अब मैं एक नोटिस मैंने देखी नहीं उसकी शक्ल, कोई मुझे उसकी शक्ल ही दिखा दे। सर अभी सर ये CM दी है, यार अलाउ कर दे जरा प्लीज। आप देखिए ना थोड़ा, अब आपके सदर बात कर रहे हैं, आप इनके ताबे नहीं हैं। अच्छा सर, जरा आप बात तो कर लेना पूरी। हाँ अच्छा जी, तो एक तो ये है कि इस हवाले से बिल्कुल हम आपको ये नोटिस जो भी जारी हुए हैं, काफी लोगों को नोटिस जारी हुए हैं, लेकिन ना वो नोटिस की बात आए तो हमारे सामने ना, फिर उस पर हम ऑर्डर कर लेंगे ना। अभी आप कुछ और बात करें ना, वो बातें तो आपने सारी सुन ली ना, नोटिस वाली बातें। 184(3) में हम जाएंगे ना, फिर आप सुमोटो इख्तियार इस्तेमाल करेंगे ना, तब समझे ना, उसके लिए कमेटी के पास जाएगा। सारा आपको बता दी है, आप फिर वही बात, हर आदमी वही बात कर रहा है। या आप अपने बाहर जाएंगे कहेंगे मैंने तो सुप्रीम कोर्ट को बात कर दी थी, सारा मलबा हम पे डाल देंगे।
نہیں یہ ایسے نہ کریں نا, یا تو کہ ہم قانونی ہماری تشریح غلط ہے, ہماری قانونی فہم غلط ہے. بار بار ایک بات کو دہرانے سے کیا اس میں وزن بڑھ جاتا ہے. اٹارنی جنرل سے کم از کم یہ انڈر ٹیکنگ لے لیں کہ الیکشن کے بعد تک جو ہے, کیونکہ ڈیوٹیز ہیں جرنلسٹ کی. صاحب آپ کچھ نہ آپ بیٹھ جائیں تھوڑی دیر, ان کو بات تو کرنے دیں. آپ سر اس میں ظاہر ہے کہ بڑا امپورٹنٹ کیس ہے, اور میں آپ نے میرے خیال میں پریس ان چینز وغیرہ جو ہوا ہے گزری ہے صحافت پہ, آپ نے پاکستان تاریخ سے واقف نہیں ہے. واقف ہے, کوڑے لگے, جیلوں میں گئے ہیں, بالکل آپ تو ایسے برپا ہو گئے کہ نوٹس سے بھائی جا کے پتہ نہیں کیا کہے گا. آئی ڈونٹ نو, مطلب سر بیسیکلی ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ. میں نے آپ کو کیا کہا, میں آپ کو دوبارہ کہہ دوں, ہمیں بھی نوٹسز ملی ہیں. ہم نے کوئی اسٹے آرڈر نہیں لیے تھے, ہم چلے گئے تھے نوٹسز کے لیے. کل پولیس والا مجھے کہہ دے کہ جی آپ کے محلے میں قتل ہوا, آ جائیے, میں چلا جاؤں گا. نہیں سر, ہم اس میں بھی پٹیشنر تھے جب آپ کو نوٹسز ہوئے تھے, اور ہمارے لیے آنر کی بات تھی. آپ جب لے آئیں گے ہم دیکھ لیں گے نا چیزوں کو. ہم ابھی سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتے, کل خبر لگ جائے گی. سر یہ فائل پڑی ہے آپ کے پاس, ہمارے دوستوں نے دے دی ہے. اب یہ جائے گی, اچھا اب سن لیجئے نا, یہ جائے گی, اس میں نمبر پڑے گا, پھر پیش ہوگی کمیٹی کے پاس. اگلی بات کریں سر, یہ سی ایم اے ہے سر, کورٹ الاؤ کر سکتی ہے. سی ایم اے ہے, اس کو ریٹ میں کنورٹ کر دوں. میں نے آپ سے اتنی دفعہ بولا ہے اس کو. سر اصل سارا ایشو سر کالا نوٹسز کا ہے. وہ سی ایم اے جائے گی نہیں کمیٹی کے سامنے, پھر وہ کہے گا. ظاہری بات ہے سر, سی ایم اے سب سے سینئر صحافی کون ہے ادھر؟ جی میں تو اس وقت پریزیڈنٹ کے طور پہ سب سے سینئر, مجھ سے صحافی سینئر کون ہے ادھر عدالت میں؟ جن کے بال سفید نہیں, یہ بھی بہت سینئر ہیں. یہ بھئی آپ کو پتہ نہیں ہے کہ پریس کے ساتھ ہوا گیا پاکستان میں, شاید آپ بھول گئے ہیں. میں کافی میں نے کیونکہ کنسیڈر کیا تھا, وہ ضمیر نقوی صاحب نے کتاب لکھی تھی پریس ان چینز, ضمیر نیازی صاحب نے لکھی تھی پریس ان چینز. ہاں ذرا پڑھ لیجئے گا اس کو ذرا. کوڑے لگے ہیں, مطلب کیا کیا نہیں ہوا ہے, آپ کیا کیا ظلم نہیں ہوا. سر یہ پی ایف جے کی بڑی تاریخ کیسز بھی ہے نا, اور پریس فریڈم کے حوالے سے کل بھی ہم کام کر رہے تھے, آج بھی کر رہے ہیں. میری صرف ایک ریکویسٹ ہے. اچھا آپ سے ایک سوال پوچھ لیتا ہوں. جی, جرنلسٹ جھوٹ لکھ سکتا ہے یا نہیں؟ جھوٹ کرائم ہے سر, کیسے لکھ سکتا ہے؟ نہیں کرائم تو نہیں ہوتا ہے جھوٹ لکھنا, یہ آپ کی بات غلط ہے. نہیں تو اگر وہ لکھے تو کیا ہو؟ کچھ نہیں ہونا چاہیے کاروائی. آپ دیکھیے, ہم اپنے آپ کو ابو دی لا نہیں سمجھتے. لا کی بات نہیں ہے نا, لا تو وائلیٹ نہیں ہو رہا ہے, وہ ریٹریکشن ہوتا ہے نا اس کا. جھوٹ لکھنا کوئی لا میں ایسا اسپیسیفکلی نہیں ہے. تردید یا معذرت. آپ سے ایک سوال پوچھ رہا ہوں, جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. کیوں؟ قانون میں کوئی ممانعت ہے؟ اس لیے کہ اخلاقیات بھی ہے, یہ باتیں اخلاقیات کی آتی ہیں جی, یہ سیلف ریگولیشن کی آتی ہیں. اگر آپ کو جرنلزم کو سٹرونگ کرنا ہے تو یہ آپ کو ہی سوچنا ہوگا کہ کیسے بہتر کریں. کل کوئی اخبار میں خبر لگا دیتا ہے کہ پاکستان کی آبادی 3 کروڑ ہے, غلط ہے نا؟ غلط ہے. اس پہ تو کوئی یہ نہیں کہ کوئی قانون توڑا ہے, کچھ ہے, جھوٹ بھی ہے, ٹھیک, مگر رہے گی بات. کیا آپ کریں گے؟ کچھ بھی نہیں کریں گے. ٹھیک ہے, آپ بتائیں کچھ کریں کہ ہاں یہ غلط ہے, میں نے اپنے صحافیوں کے خلاف ایکشن لیا. یہ بھی پتہ نہیں کیسے ہوتا ہے, مجھے نہیں پتا. آپ نے ممبرشپ اس کی کینسل کر دی ہے. یہ ہمارے ہاں پریس کلب میں بھی اور پی ایف جے میں پورا پروسیجر موجود ہے. اگر کوئی جرنلسٹ اس طرح کی خبر دیتا ہے, کیا کرتے ہیں آپ؟ اس کی کمیٹی بنائی جاتی ہے, اور پھر اس کو اکارڈنگ ٹو اس کے ایکٹ کے مطابق جو ہے وہ بتائیے نا کیا کرتے ہیں. جی بتائیے نا. پھر جرمانہ کرتے ہیں, بعض ممبرشپ سسپینڈ کر لو, میری ممبرشپ سسپینڈ, خدا حافظ, مجھے نہیں چاہیے ممبرشپ. پھر کیا کرتے ہیں آپ؟ دیکھیں میرا نہیں خیال کہ آپ بتائیں نا. دیکھیں آپ پہ بات آئی تو آپ نے کہا میرا خیال نہیں, کبھی ایسا ہوتا نہیں ہے, کبھی نہیں ہوا پاکستان کی. جو جرنلسٹ کہے کہ بھائی مجھے ممبرشپ نہیں چاہیے, میں نے کانسیکوینسز کیا ہوتے ہیں اگر آپ ممبرشپ کینسل کرتے ہیں تو اس کی کانسیکوینسز, اس کو نقصان کیا پہنچتا ہے؟ جیسے بھی چلو اچھا میں کل ایک یوٹیوب چینل کھول لیتا ہوں. ٹھیک ہے جی, کوئی فرق نہیں پڑتا, میں نہیں ہوں ممبر آپ کا. فرق سر پڑتا ہے باتیں سوچ جب کوئی بھی باڈی. یہ دیکھیں, یہ فورم تقریر کرنے کا نہیں ہے. اگر آپ کو کچھ کہنا ہے لکھ کے دیجیے,
ठीक है, हम आपको इजाजत देते हैं। एक रिक्वेस्ट है कि फिर 8 तारीख तक कम से कम, जब तक ये इलेक्शन नहीं होता, कम से कम सब लोगों को उस हद तक FIA को आप इंस्ट्रक्शन दें। अब मैं कोई बात समझे नहीं ना, ये बार बार दोहराने से मुझे अच्छा नहीं लगता है। हम लिख के भी दे देते हैं, आप जो रिक्वेस्ट आप वो लिख के तो दे दीजिए और उसको कन्वर्ट कर दो 184 में। इसमें लिख अभी टाइम और बात रहेगी है इसमें। ओके सर, हम सब लिख के देते हैं। रिक्वेस्ट आपके केस हमने निकलवा लिया जी, थैंक यू वेरी मच। क्रिमिनल 48/2020 और ये दूसरा कौन सा केस है? ये वो कंटेम्प्ट वाला है। आज भट्ट साहब, अगर आज आप लोग यहाँ पर खड़े हैं, बड़े अफसोस की बात है, आप खड़े हैं, दुनिया देख रही है, तो इसकी रीजंस हैं। आप लोगों को जो इखलाकी ड्यूटीज थी वो उससे बहुत लोग पीछे हट गए। पाकिस्तान में बहुत अच्छा भी हो रहा है, लेकिन उसको हाईलाइट नहीं किया जाता है। ढूंढ ढूंढ के बुराई को, अगर हर मुल्क में बुराइयां हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो है बुराइयों को ही हाईलाइट किया जाता है। कितनी अचीवमेंट हमारी साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हो रही है, कितने जवान हमारे इंटरनेशनल लेवल पे कम्पीट कर रहे हैं, कुछ हमें नहीं पता। हमारी कैंसर की बीमारी का जो मेडिसिन तैयार की लियारी के एक लड़के ने की है, किसी को नहीं पता। हमें बाहर मुल्कों की प्रेस से पता चलता है कि तो कुछ बेटर इमेज भी बताए ना पाकिस्तान का। बहुत सारे मुल्कों से हम बहुत आगे हैं इस लिहाज से, लेकिन हाईलाइट नहीं हो रहा सब कुछ। एक रिक्वेस्ट है आपसे, जो कोड ऑफ कंडक्ट और मीडिया के हवाले से जो भी शिकायत यहाँ पे डिस्कस हो रही हैं, उसको FIA एक लाइसेंस समझे कि फर्दर प्रोसीड प्रोसिक्यूट करने के लिए। हम उनके माइंड रीडिंग नहीं करेंगे। अच्छा, एक आपका केस बता दूं, आपका सिर्फ एक केस ने बताया, उन्होंने कहा क्रिमिनल ओरिजिनल P48 of 2020। इसके साथ कोई और केस इसके साथ नहीं है? अगर कोई है तो उसका नंबर दे दीजिए, क्योंकि हमारे सिस्टम में कोई और केस नहीं आ रहा है, वो भी हम लगवा देंगे। आप बाद में दे दीजिएगा नंबर, इसमें लिखें। ये पूछेंगे अटॉर्नी जनरल से। अटॉर्नी जनरल साहब, इट इज सो मच माई सेल्फ। मतलब ये अभी जो GIT कौन हेड कर रहे हैं अभी? My lord, it's the additional DG FIA crime going FIA. ये जो आपने अंडरटेकिंग दी है, अगर ये आप इसको इलेक्शन के बाद सेशन रखना शुरू करते तो कोई हर्ष तो नहीं होगा। ये 4-5 दिन की तो बात है, इसमें बीच में छुट्टियां आ जाएंगी, 2-3 दिन वैसी। 5 फरवरी छुट्टी है, फिर इलेक्शन की छुट्टी है, उसके बाद फिर ये 2-3 दिन रह गए ना। जब तक ये अपनी एक पिटीशन भी फाइल कर देंगे, वो चीजें सामने आ जाएंगी ना, सही तरीके से हार्मोनाइज हो जाएंगी कि आप सही हैं, ये सही है, GIT ठीक है, क्या ट्रोलिंग हुई है, क्या गड़बड़ हुई है, वो तो खुद भी उसको सपोर्ट नहीं कर रहे ये लोग जितने खड़े। अगर ऐसा है तो आपकी अंडरटेकिंग आप इसको इलेक्शन के बाद चले जाएं, कोई हर्ज नहीं है। पॉइंट हमें देखना है GIT क्या होती है, कानून में इसका है जिक्र नहीं है, ये सारी बातें आप तैयारी करके आइएगा, क्योंकि अभी तो हमें जब केस आएगा आई कैन ओनली थिंक अलाउड कि ये सारी बातें सवाल उठेंगे। 8 को इलेक्शन है, उसके नेक्स्ट वीक में रख लें। 8 के बाद जो है 8 में जुमेरात है, जुम्मा हफ्ता है, तो मंगल कोई नेक्स्ट जो है के बाद ही होगा। एहतियात से रिपोर्टिंग इलेक्शन के दौरान ये जो होगा इसका मतलब कुछ और होगा। एहतियात से रिपोर्टिंग करें। You can discuss this with any FIA director or any person who is present in this. The notices are under section 160 of the CRPC. जी 160 का notices. And which provision? 160 of CRPC. These are inquiry stage. Inquiry stage के ऊपर आती है. Inquiry stage notices. And as it is just like a call-up notice. जी call-up notice. And it's not a criminal case. Not yet, sir. Not yet. So it is only, and as I had submitted an undertaking yesterday, and so the inquiry officers are going to strictly follow what was submitted before this court. We are not asking, we are not going to stop you for the inquiry. We only say कि ये जो 5-6 दिन बीच में इसमें 2-3 दिन वैसी छुट्टियां आ रही हैं, हफ्ते को आपकी भी छुट्टी है, फिर इतवार है, फिर पीर है, 1-2 दिन ही तो 3-4 दिन है वर्किंग इसमें। तो अगर इसको अगर आप 8 के बाद वाले वीक में ले जाते तो कोई चीज रुक नहीं रही। वी आर नॉट गोइंग टू स्टॉप यू, neither they are stopping you to do anything. They only request for some time. In the meanwhile, they will file the petition here. The matter will go to the committee and the committee will decide. And
We will also see the constitution of JIT under the law, whatever their allegations and counter arguments made by you. इसको देख लें, अगर इसमें कोई, मेरा नहीं ख्याल है कि इसको रोकने में कोई बहुत बड़ा हर्ज है, मतलब things will not be. At this stage, if I may say, at this stage, it is only the statements that have to be recorded, nothing beyond that. What is statement? So, if there are any, under 160, my lord, if there are any screenshots of any tweets which were on the Twitter which were tweeted or any. So you are saying no coercive action will be taken? Yes, yes. अच्छा, सर जिन ये तो आपका मसला हल हो गया। नहीं सर, लेकिन जिन जर्नलिस्टों ने इलेक्शंस में ड्यूटियां करनी है, अपनी दूसरी ड्यूटी के वो FIA की पेशियां भुगतेंगे सर, बजाय इसके के इलेक्शंस के बाद हो जाएगा वही मसला। सर ये इलेक्शंस के लिए हम अटॉर्नी जनरल से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अभी ऑर्डर नहीं कर रहे। इन प्रोसीडिंग्स में तो ऑर्डर नहीं हो सकता, लेकिन सर जिस तरह वो इंसिस्ट कर रहे हैं थोड़ा सा इसके अंदर आप इलेक्शंस आज क्या तारीख है, कितने दिन रह गए? 30th, so we are just left with 8 days रह गए, 4-5 दिन रह गए, इसको कर दे आप कहेंगे इलेक्शन के बाद। जरा प्रोफेशन का इशू है कि भाई they are running here, there are so many stories developing, they are unable to perform. Show some grace for the journalists also. Of course, they have. You should thank him, not us. They have to be professional. We are saying he's there thanking us. We don't thank us. Thank you. ठीक है, अब ये सर आपका थैंक यू यहाँ पर अदा करेंगे, उनका चाय के कप पे करेंगे। हमें शुक्रिया नहीं करें, इनको शुक्रिया करना है तो करें, अगर आप करना चाहें। सर नहीं, इसमें लिख लें, इसमें लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। ठीक है सर, आप इसमें पार्टी बनना चाहते हैं ना? जी जी। अच्छा, They'll have to. पिछला ऑर्डर कहाँ गया? वैसे ये जो डिस्कशन हो रहा है ऑन जनरल पॉइंट्स, दिस काइंड ऑफ डिस्कशन शुड बी हेल्ड ऑन एवरी. This is a serious discussion where freedom of expression, truth, you heard speech. You know, every country deals with it differently. I mean, sort of in Thailand, there's one very severe kind of law, which is their country. That's right. In America, is the First Amendment. Here, we have 7 restrictions in the freedom of expression. In Europe, you can't even say something. Exactly. You know, it's called something denier. So it's a variable thing. And I always stress most towards the truth. I don't know why, but that's my personal thing. It doesn't, the law doesn't really say that. इसमें लिखिए कि कल का ऑर्डर का है? हाँ हाँ, अच्छा शुक्रिया. Abdul Qayyum Siddiqui points out that the 4 journalists who, in the order passed yesterday, he had forgot to mention, in yesterday's proceedings, he had forgot to mention the attack on Mr. Absar Alam, who was a journalist, and as such, paragraph 2 of yesterday's order may be read to include his name as well. Full stop, order accordingly. So it extends the report that you have to submit. It will also apply to Mr. Absar Alam. इसमें लिखिए, Mr. Afzal Butt states that he is the president of the Pakistan Federal Union of Journalists and wants to become a party to these proceedings. Full stop. He may move a appropriate application and may also submit suggestions as to how to proceed further with these cases. Full stop. आपका नाम लिख दें, प्रेसिडेंट पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट पे आपका नाम प्रेसिडेंट का कैसे लिखते हैं? सुप्रीम कोर्ट प्रेस एसोसिएशन या प्रेस एसोसिएशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट? द प्रेसिडेंट ऑफ द प्रेस एसोसिएशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट states that they will be filing a petition
with regard to press freedoms and the difficulties being faced. Full stop. Office to immediately number the same and to register it as a constitution petition under Article 184(3) of the Constitution, comma, number it and place it before consideration of the committee, capital C, constituted under the Supreme Court Practice and Procedure, bracket close, Act, comma, 2023. अब हम कह तो नहीं सकते मगर इसी के साथ ही वो कनेक्टेड हो जाएगा। चाहते हैं आप पिटीशन फाइल करना चाहते हैं, पार्टी बनना चाहते हैं? हमारी पिटीशन में पिटीशन फाइल करें। नहीं, अगर आप इनकी पिटीशन में पार्टी बन रहे हैं तो फिर तो वो खुद ही फिर तो अलग एप्लीकेशन होगी। अगर आप अलग उनके साथ आना चाहें तो आप भी बन जाए उनसे पार्टी 1, 2, 3, 4, मतलब अलग भी आप करना करो ना, सेपरेट पिटीशन हो जाएंगी वो जरा जैसे भी आप लोग कर रहे हैं, फिर वो एप्लीकेशन दे रहे हैं, वो पता नहीं किस केस में एप्लीकेशन दे रहे हैं, पुराने में एप्लीकेशन दे रहे हैं, आप नया तो कोई है नहीं अभी इसी केस में बने। हम आपके लिए वो उसको थोड़ा सा ऑर्डर चेंज कर देंगे, आपके दोनों दरवाजे खुले, इस तरफ आना चाहें उस तरफ आना चाहें, जैसे भी सोच समझ के आप कर लीजिए। और आप अपनी फाइल करेंगे 184 में। अच्छा, फुल स्टॉप। आपने क्या कहा था? हाँ, वो लिखिए, number of concerns were addressed and learned Attorney General reiterated the undertaking given in the court, and further on the request of the journalist stated that that the matter meeting of GIT that matter regarding journalists will not be taken up or proceeded, will be taken up or proceeded by FI before the elections. ठीक है, and thereafter all right, ठीक है जी, ठीक है, it's your undertaking, not our order, it's your undertaking. और अगर नई डेट होगी तो उसकी नई नोटिस इश्यू होगी, जाहिर है पुरानी डेटें तो गुजर चुकी हैं उन नोटिस। There would be a follow up इसमें लिखिए, अब अगला लिखें, follow up notice, Mr. Heather Waheed, he learned Mr. Heather Waheed, and if follow up notices are to be issued, they will be issued after the elections. ठीक है ना, फॉलो अप तो करना पड़ेगा। Mr. Heather Waheed, Council in CP number 27 of 2022 stated, made submissions, number of questions were raised, and he stated that he will be attending to them if some time is granted by filing a concise statement, and requested that the matter be adjourned to a date after 2 weeks. How much time did you want, Mr. Heather Waheed? That's fine. Okay. Even less than that. Okay. Full stop. आप लोगों को भी बाद में चाहिए. All present. Also stated that this case may be adjourned to a date after the elections. Yes. And which would also grant them time to file the referred to petition, whoever wants to do so. कुछ और रह गया बात? And on a lighter note, my friends from journalist community might bear in mind the observations by Her Ladyship Justice Hilali in the meantime. Sir, Attorney General is saying this about Judge of the Supreme Court. This means it is going to have a chilling effect, and Justice Sarat Hilali's statement is going to be used against us. Please. ये देखिए, ये आप अपने कोड ऑफ कंडक्ट की आपने 4, 5, 6 वायलेशंस कर दी हैं आज, और अपना इट शुड नॉट इंटरफियर इन केसेस वेयर यू आर नॉट। अब आप, हम जिक्र नहीं करना चाह रहे थे, मगर आपको मैं दिखाऊं, ये मेरे पास ऑलरेडी था और ये मैंने पढ़ा था, मैं इसका आपको शर्मिंदा नहीं करना चाह रहा था, आप इनके हाथ ना लग जाए आपके दोस्तों के। ठीक है, तो then we will give a date. Zara, let us see, because a number of important cases are coming up. I don't know when we will give a date. अगर
खुदा ना खासा कोई फर्स्ट वीक ऑफ मार्च अगर कोई फर्स्ट वीक ऑफ मार्च किसी को इतराज है? I have no objection. No objection, sir. Okay. As suggested. As suggested. As ठीक है. सर फरवरी का लास्ट वीक उसकी वजह ये है कि शायद आपस में बात कर लेना. हमें कोई इतराज नहीं. आपने कल लगाए हम कल लगा देते हैं. फरवरी के लास्ट वीक में प्लीज गिव अ डेट. जरा कंसेंसस से भी कर लेना आपस में. फरवरी का लास्ट वीक सही रहेगा. फरवरी का लास्ट वीक. किसी को इतराज है लास्ट वीक का? फर्स्ट वीक ऑफ मार्च. सही है भाई. आपका सूली मौक़िफ़ है. फरवरी के लास्ट वीक में अब टॉस कर लें. आप पे छोड़ देते हैं सदर साहब. फर्स्ट ऑफ मार्च. फर्स्ट वीक ऑफ मार्च ठीक है. चले देखिए अब आप इज द प्रेसिडेंट as suggested adjourn to a date in the first week of March. Thank you.